So yes, so in today's session, first we will start by doing the model pipeline, and then we will move on to uh, our first machine learning algorithm, which is linear regression, which is also covered in week 4. And also, like, I'll explain you like the overall working behind linear regression, and we will also implement linear regression from scratch. Okay, today itself. Like, we won't use any library like from sklearn linear model and all. We won't use those imports. We will directly implement the linear regression from scratch itself. And also, like, as I said, I have prepared some visualizations, like some like 2D 3D plots also, like this, if you can see. So these are like some of the plots I have prepared, just to like clear the understanding of how each and everything is working. Okay, so let's start. Okay. First of all, the recordings, the like recording of this session, I'll upload it in my YouTube channel here. Okay, so you can like subscribe to it for the. I'll upload it after the session. Okay, for the recording, you can subscribe to it. So okay, let's start. So these are like, this is the earlier notebook which we used in the like previous session. This is the same notebook. I have just like forked it, created a copy of it, and changed the headline. So let me like start by this. So in previous session, we have used two data sets mainly. uh, Not the like, we have just loaded two data set, but we have used only one data set, which was Titanic prediction one. So if I like show you Kaggle.com, I guess, competitions, Titanic. So this is like one competition which on which like we are doing the data pre-processing and all the stuff in past few sessions. And today, like, we'll be using another dataset which is of house prices prediction. So let me open it. Competitions. If I select on getting started, yeah, there it is. So this is the house prices competition. Okay, like, the Titanic one is of doing the classification stuff, and the house prices competition, it is for like regression stuff. Like, we have to predict the house price based on the given features of the house. So you can also participate in this competition to like to practice your ML knowledge. Okay, so let's start. First of all, is the like font size and everything is clear, guys? Okay, guys, please like keep the session a little interactive. So आप बोल भी सकते हो, and if you have any doubts, you can just interrupt me in between. No worries in that. Okay, so let me run the first cell. Okay, yeah. Now I hope the font size is pretty much clear. Also, let me open, yeah, line numbers. Okay, yeah. ये Uh, जो फर्स्ट सेल है ये मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट है ना right, it is the by default, है and ना I have just loaded the data ठीक set है here. हाँ ठीक Now, like, I'm just skipping all these things because ये जो है, this is for the Titanic prediction. Okay. Till now in Titanic prediction, we did all the stuff like manually without using any kind of pipelines. So we will use the pipelines today. Okay. First, let me like write model pipeline here. Also, let me load the dataset first. So df equals to pd dot read underscore csv, and I can just copy the path from here. So train dot csv and test dot csv will be using, and test df, which is same as this, just that the file name is test dot csv. So let me run it, and okay, pd is modified. Yeah. First step is to import the libraries, of course. Import numpy as np, import pandas as pd, and import matplotlib
pyplot as speed. So these are like the three main libraries which we'll be using. And let's see how our data set is. So this is our data set. So it is showing 5 rows into 81 columns. So we have 81 columns here. Uh, like as I told in earlier sessions, we can set the display to see all the columns. So let me do this step. pd dot set option display dot max underscore columns, and let me set it to 100. So it will display maximum of 100 columns in the data frame. Now if I do df dot head, here you can see I got a scroll bar and I can see all the features here. Okay, and this last one is the uh, predicted like the target variable. Okay, let's also look into df dot info, and obviously this will be going to a big output. So let me duplicate. Yeah. So this is like all about the each of the column we have. Okay, so we have 3 float columns, 35 integer columns, and 43 object columns. Okay, so before starting, I just want to know how many of you know about machine learning pipelines. You can give a thumbs up or even raise a hand or speak up. Okay, and like how many of you like are clear about the concept of pipeline in machine learning? Okay, Not clear. Abhishek. Okay, so let's start. So the idea behind pipeline is, let's say, just give me a second. Okay, sorry for the, yeah. Let's say we have various features in like our data frame X. We have some numerical features and we have some categorical features also. Okay, and we have like defined various preprocessors. Okay, preprocessors. So like one is to let's suppose filling the missing values. The first step is to like filling the missing values. Then for the numerical columns, like I am representing n for numerical and c for categorical columns. Like for the numerical columns, maybe like I am scaling the features. Okay, and for the categorical columns, I maybe have two types of encoders. One is ordinal and second is one hot encoder. Okay, so I'm doing all this stuff, and after that like I'm combining all these things into one data frame. Let's suppose x transformed. Okay, and then I'm doing here model dot like fit. I'm basically training the model here. So this is like the all the steps we are doing here. Like we can do all this thing in just one line, which is like by creating a model pipeline, we can say. Okay, because like we are using a model here also. So okay, uh, a model pipeline. So we can like combine all of this into just one thing, which is model pipeline, and we just have to run one or two functions and that will do everything for us. So this is the concept of pipeline. So are you all now clear with the concept of pipeline? Please go back once Okay. for a second. Yeah, can you just repeat once more? Okay, so let's suppose we have a data set in X. Okay, and in X in the like whenever we load the data set, we have to do a lot of pre-processing. Like we have to impute the missing values, and sometimes we have to scale the numerical features, and for the Yes, yes. categorical columns we have to transform them into either ordinal encoding or one hot encoding, right? Then we get our final data set, which is here, which is basically ready for the model, right? This data set is ready for the model and this is not, because this is the raw one data set. And now in this data set we do the model dot fit and all. So these are like all these steps which we are doing. Here we have to handle a lot of variables and a lot of preprocessors, transformers, and like scalars to like doing all the data manipulation and pre-processing stuff. So it will like it become very tedious to like handle each and everything.
sometimes we may forgot to like use x underscore train, and we गलती से हमसे क्या हो जाता है, we like use x comma y directly like in the pre-processors and all the stuff. So उससे जो है it will like uh, it becomes the mess. Okay, like let's say, so this all these things which like all this thing which I have done here, we can do everything in just one pipeline. Okay, so say code थोड़ा short होता है, not much like in compared to like uh, based on the number of lines, but one thing is कि everything is getting like wrapped up or encapsulated in one thing, which is like pipeline. And in all the like pre-processors and everything, we have three functions, right? Mainly first is fit, second is fit underscore transform, and the third one is transform, right? Like the sklearn library जो है, like it is made like that so that we have all the uniformity, like all these things are uniform in the all the pre-processing stuff, whether like we are using transform like scalar or uh, transformer feature transformation, or doing missing the like filling up the missing values. So we can like combine all of this in just one thing, which is model pipeline, and we just have to call the like fit function, or we can say कुछ ही functions हमें call करने पड़ते हैं, like just 2 to 3, nothing more, and everything is covered up in that. So this is the concept of model pipeline. Param, Yes, actually for some we call fit transform and for some we call fit. right. So can you explain the difference? Okay, so Like where all we call that fit transform, because a pipeline pre-processing वगैरह के लिए we use fit transform, mhm. but for some things we only say fit. Okay, So, so we have three functions: fit underscore transform, and transform, right? Okay, yeah. just 1 second. So let's suppose we have two data sets. One is x train, and the other one is x test or x valid. Let's suppose we have x valid. Okay, and let's say we are basically filling up the missing values in the data set. So, and our strategy we are using is mean. So in training data, let's suppose training data we have various samples, let's say 100 samples, but in validation, let's suppose we only have one sample. I'm just checking it for like covering up the edge case. Okay, क्योंकि like in production we don't get a lot of predictions like doing at once. We have to do prediction on each and every sample, right, on the test data, like whenever we deploy a model. So that's why just I'm taking one like we have only one sample in x valid. So what does fit do is fit basically compute the values. Okay, so here we are computing mean, like we are using the mean strategy, we are imputing mean in the missing values. So it will just compute the mean here, which is x bar by, like we denote the mean by x bar, right? And then we have the transform. So what transform will do is it replaces the missing values with the computed value. Okay, so it is basically replacing, it is doing the transformation which we needed, and the fit is basically computing, doing all the computation. Okay, and then we have fit underscore transform. So what underscore transform do is like if I number them, so it do both of these steps together, first and third, as like the name suggests, fit underscore transform. So first it will like it first compute, and then it replace okay, then it replace the transform the data set mainly. So like with the value whichever. So it applies Yeah, whatever it is calculated, it applies on the data set, right. right? But when we do model, Mhm. when we do model also, like instantiate and then do the call that model, right? That time also we do fit.
but we only do fit, not transform. Right, right. For models and all, it is only fit, right? But the pipelines are made like that. They can like underneath they call the fit transform. Okay, whenever we call the fit method, so pipelines, the pipeline class and the So like the the transformer pipeline class के made अंदर like we that. also inside the pipelines we call the models, Right. and when we call the pipeline we say fit transform. But only the model, when we do it on the train set, or we generally train the model. No, while training the model, it's only fit. Is it? Right. While just training the model, fit is just the name, like we are fitting the data set into the model. Basically, we are Into training that the model. model. So this Okay. is like the difference in fit and fit transform. And on xtrain, we have to like call first or three or directly the second function. And then on the x valid or x test dataset, x valid or xtest dataset, we just have to call the transform function, because we are not computing any kind of values in validation or test dataset. We already, like we have already computed the values. Okay, so this is what uh, fit underscore transform and transform to. So is everything clear to you all? परमप्रीत आपने क्या बताया अभी टेस्ट के बारे में? uh, टेस्ट टेस्ट डेटा के ऊपर हम ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं? right, in test and validation data we only have to call the transform function. We should बिकॉज not वी call वांट द प्रेडिक्टेड वैल्यू, है ना, इसलिए we क्योंकि हमें want, ट्रांसफॉर्मेशन yes, we चाहिए। already हाँ have, like हमने पहले से वैल्यू कंप्यूट कर लिया, and we just have to हाँ, transform the data set. We have to replace those values, just that सो we वी have जस्ट to. वांट ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए हम टेस्ट और वैलिड डेटा में सिर्फ ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, Right, right, है ना? हाँ। right. Okay, so I hope this is clear to you all. uh, और एक बात और, जब हम पाइपलाइन बनाते हैं तो लास्ट स्टेप हमारा मॉडल ही होना चाहिए, एस्टिमेट, not necessary like, तभी हम फिट लगाते हैं ना। right, but अगर हमारे पास, we only have the transformers in pipelines, like pre-processing, only pre-processing we are doing, then we can call directly fit underscore transform if we don't have the हाँ, अगर model there. अगर हमारे पास मॉडल नहीं है तब, अगर हमारे पास Right, मॉडल है तब मॉडल सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए। right, right, right. हाँ, So let's start. uh, okay, so in the df.info, like first we have all these models, then let's separate some. Okay, let's check how many null values we have. So df dot is null dot sum, of course it will be giving us some output. Let me like check which columns have the null values. Okay, uh, is null. So these are all the columns in which we have the missing values. Okay, so I have just like computed the number of missing values we have, and like मैंने एक filter apply कर दिया, applied a filter which is like if the value is greater than 0, then only it should show the value. So these are like all the null value, number of null values we have in each of the column. And let's first separate our data set. Okay, which is the first step. Which let's do df and drop columns equals what we have here, sale price. So let me just copy it directly, and in the y we have direct df sale price. So now we have our like separated data set in x and y. Also like we have id column here, so we can just use it as an index. Okay, index call equals id is short okay, that's correct. Let me copy it, same, like copy the same stuff for this. So here we have like id as an index, and rest all the columns uh, in the x, and in y we have the sale price. If I do y dot head, we have like these sale prices, and these are the values. Like But this how is did the, you drop that index column?
I haven't dropped. There was already an index column, right? There was index by default. If we create a data frame, we get a default index, which is of a Uh, range. I haven't dropped it. but I've just replaced it. Like I I oh, have okay, written okay. here You index column equals consider ID. ID as the index column. Right, right. Okay, okay. So this is like doing its. We have splitted the data set here. Now, yes. So one now like let's start from basic stuff, which is uh, separating numerical and categorical columns. Okay, so I'll just write num calls equals I'll select only the numerical columns here. Okay, I should split the dataset also further, like for the validation dataset. So I'll be using here train test split from scalar dot model selection import train test split. So if I run it and x train x valid y train y valid and train test split, I am passing x and y both, and I'm setting the test size as 0.2, means 20% of data will be in validation set and rest 80% in training set. And I'll set random state equals 0 to just like keep the uniformity. And we have like the data set in this shape now. So it is transforming, and we have 100 and 168 columns in xtrain rows and 292 rows in xvalid. Okay, so now the first thing is like basically filling up the missing values, right? We can either drop the rows or something like that, but what we can do is okay, not here, yeah. We can simply impute those missing values with some other value. Okay, okay, before that let me just write it here. uh, okay, let me import the imputer first from sklearn dot preprocessing. Okay, not imputer, sklearn dot impute simple imputer. I'm just using simple imputer. You can use any of the imputer, either simple or knn imputer. Okay, now let me like separate the numerical columns and categorical columns. So x dot select d types, not x, sorry, xtrain dot select d types, and I'll write exclude equals object. So we have three types of columns, right? If we see here, I'm just gathering all the numerical columns, float and integer numerical, and I'm excluding object columns from here. And here like I'll just write columns. So I'll get all the numerical columns we have. So these are all the numerical columns. And then let me separate the categorical columns. There are many ways to do the same thing. I'm just doing one thing, which is let's say, yeah. I'm just doing the same thing. Select d types, and I'll only include object columns. Okay. परमप्रीत, अगर आप यहाँ ऊपर डॉट कॉलम्स नहीं लिखते हो तो क्या It will रिजल्ट give the आएगा? data set of all the numerical columns. Okay, so if I run it, you can see it is giving me the complete अच्छा, data डेटा set, फ्रेम but it देगा. is ठीक excluding है. the object columns. Okay, हाँ, और अगर डॉट कॉलम्स लगाओ तो वो so एक I'll एरे get दे the देगा columns. कॉलम्स के नेम की. ठीक है. Right, and we have categorical columns here. So these are the categorical columns and these are the numerical columns. Okay, now the first thing is doing the imputation. So just a second. Okay, for the imputation what we can do is like हम लोग या तो कस्टम एक imputer define कर सकते हैं, and we can do the fit and fit transform which we did earlier, or rather we can use like a transformer mainly. Okay, not exactly the transformer name. We can create a pipeline, okay, which will just do all the stuff for us. So how, let's see. Okay, for that first I have to define the imputer too, because how can I, yeah.
simple, I'll write imputer equals simple imputer, and here I just have to like write stat. By default I'm choosing the strategy mean. Okay, and we'll do the imputation on the numerical columns only as of now. Okay, and okay, okay, so this is the imputer I have defined here. By default the strategy is this. Generally what we do is imputer dot fit transform, and I'll pass the exchange. So this is how we do the transformation. Okay, I got an error which is cannot use non-numeric data. Yeah, I have to choose the numerical columns only, so I'm choosing the numerical columns, and this is like this. Now the data set is basically all the missing values are imputed here. So this is like the, you can say, a rough way to do the same thing. What I'll do is, instead, let me just comment it out. I'll create a pipeline of it. Like हम धीरे धीरे start करते हैं. So I'll write from sklearn dot pipeline import pipeline. So I have imported the pipeline here, and pipeline बनाने के there are like many ways. I'll just write, let's say, model pipeline, and I'll write pipeline here. Then what I'll do is, okay, yeah. So normally like we have various steps in pipeline. First एक basic step से start करते हैं, which is doing the imputation. So in pipeline what we have to do is we have to pass a list of all the steps which we are doing. Okay, so I have just defined a list here. Okay, this is an empty list, and in the list each step like we have to pass as a tuple. In the tuple, first one should be the like name. Okay, so I'll just write num imputer, and then the second step is the basically the thing which we are doing. So here we are using the imputer. So what I can do is I can directly copy it, or I can copy the imputer also. So let me just copy it directly here, and by this like we'll get a simple pipeline of just one step. So if I run it, I'll just, so here you can see I got a pipeline here. In this pipeline I have only one step, which is this one. Okay, and that step is simple imputer. So I can do like a lot of things. Let's suppose if I want to scale also, so let me import the scaler from scalar dot preprocessing import standard scaler. So let's suppose हमें जो है missing values को impute करके उसी time I have to scale those values too. Okay, but I'll just write num scalar. Anything I can write as a name. It doesn't, first value should be the name, and the second value should be the transformer, like the class itself. We have to call the class. Okay, or the step which we have to do. So here I'll write standard scalar, and I'll just call it. Okay, now if I run it, you can see I got this pipeline with these two steps, and the first step is simple imputer, the second step is standard scalar. And I can like this is a rough diagram which I am getting. So इससे आपको थोड़ा idea मिल रहा होगा. Like, is this clear to you all? Guys, is this clear to you all? Yes, yes, yes. Okay, so this is the like model pipeline. Now how to do like the stuff which we wanted to do. What we can directly do is आप लोगों को like पता है simple imputer and standard scalar में we have the same functions, fit transform and transform. Okay, now I'll simply write fit underscore transform also I can write, or fit also. So like I'm just doing the transformation on the trained data set, so I'll write fit underscore transform. Okay,
what I have done is here is I have written the pipeline, then dot fit transform, the same function which I have called here. Okay, because both of them have this function in common, so it will do the steps. Okay, I will get an error. Cannot use. Okay. I have to select only numerical columns. So if I write num calls, so here you can see both of these steps like have done in one step only. So एक ही बारी में मेरे दोनों चीजें हो गई. So this is what pipeline do. So like, is this understood? Like, आपको समझ आ गई? If you guys have any confusion till now, you can just speak up. Yeah, Param, I have. पाइपलाइन हमने बनाई, हमें मिसिंग वैल्यू ही लेना है तो हम स्ट्रेटेजी अपनी मीन लेके चलते हैं. Right, by यहाँ भी default. मीन ले या अगर मुझे मोड लेना है तो सेकंड पाइपलाइन में डिफाइन करना पड़ेगा, उसी पाइपलाइन में हम उसी में दोनों we तीनों या can. किसी उसी में we can. Okay, let me मतलब like. हम मीन भी कर सकते हैं, मोड भी कर सकते हैं या कांस्टेंट भी ले सकते हैं. तीनों को डिफाइन कर सकते हैं उसी एक ही पाइपलाइन में. Right. Let's okay. So जो आपने पूछा है उसके लिए like we have a different example. Let's suppose we are doing the cross validation and all the stuff. ठीक है. And जैसे मैंने आपको बोला था कि it's just a hit and trial. We have to like try all the strategies like to find which one is working better. Okay. Like either mean, median, mode, or any custom value, right? So what we can do is we can create different pipelines and we can compare the result out of that. So like here I have defined first pipeline, and similarly here I have defined second pipeline. So model pipeline 2, and here I have strategy equals median. Okay. Now okay, before doing that, let me show you in the xtrain xtrain.describe. So in the xtrain.describe, if we only take the first let's suppose this column only, so here we have the mean as 56, okay, and the median as 50, right? So after that, like, we have done the scaling also. If I don't do the scaling and if I simply run it, now here we get a lot of values, and in the first column only we if I transform it. Excuse me, actually, the standard scalar, no, what it do actually? Okay, standard scalar basically scales the data set. Standard scalar uses this formula. If I like show you, so what it does is for every data point. Okay, let me write it here. Yeah. So x I and minus bar of x. So this is what standard scalar do. Okay, not here, like this. So this is the formula of standard scalar. What it is doing is it basically scales the data set. It subtract the mean from each point, okay, each training example of specific feature, and it divides the that difference value by the standard deviation of the complete column, okay, and it scales the value in the range of, let's say, -1 to 1, we can say, roughly, not exactly I'm saying the range because the range varies from data set to data set. So standard scalar basically scales a data set. So like आपको center करना पता है data set का, like if we have to center the data set, we subtract the mean out of it, right? Yeah. The same thing we are doing here. We are just like scaling it down also a little bit. Let's suppose here I have the data set, and the data set is like this, okay. Now if I apply the standard scalar, what it do is okay, let me write it here. So what it does is
like the standard scalar. First thing is it subtract like first thing is it centers the data set, that is it is subtracting the mean, right? So the data set will be like translated from there to here, like around 0, because it is now centered, the data set is centered. Now the second step, it is dividing it by standard deviations. So standard deviation basically tells us how much our data set is spreaded, right? Standard deviation and variance, these two uh, like ये दोनों हमें बताते हैं कि how much our data is spreaded. So if I divide it by standard deviations, so I'll get the data set like very much around 0. So this is what standard scalar is doing. We call this technique as z-score normalization. Okay, z-score normalization. So it basically, we can also say it is normalizing the data set, or it is like scaling the data set. So earlier we have this data set, you can see it is spreaded very much, but now we have the data set here like this. Why we do this, I have explained it in the like previous session, so I'm not going into the explanation. It's just like to help our model converge better. But one thing, standard scaling doesn't help in tree models. This one thing I just want to remind you of. Yeah. Then And one more thing is that in data we didn't see missing values, like we, is it nan or is it question okay, mark? here Is we it can like here inside we anything and we done this okay, regression? so here you can see in alley column we have nan, so many nan values here. Like here, can you see this alley column? Yeah, yeah. So So every time missing values will be nan only, or no, some no, no. places. It depends upon the data set, because we are participating in a competition, and that competition is like in the competitions, like the organizers generally provide us very much filtered data set. Okay, so we have everything in some standard. So the standard way of defining null values is just using np.nan, right? But like in our practice assignments, we have some data sets which have missing values by question mark, so we have to like analyze our data set before pre-processing. So that's why I said we have to do EDA before data pre-processing, right? So this is just to analyze the data set. I'm not doing the EDA and all, I'm just like skipping those steps here. Okay, by doing the EDA you will get an idea like where do we have the missing values and all, and what kind of missing values do we have. Okay, so this was the first pipeline, which is like this simple imputer, then standard scalar. Then we have the second pipeline, which is like here we have just using the strategy mean. Okay, then if I run it, here you can see, if I like expand it, you can see in the simple imputer the strategy is defined as mean, and in the scalar this is the scalar as earlier. So this is the diagram how it looks. I'm not calling any separate function, I'm just writing the pipeline here, and by default in the Jupyter notebooks it shows us the diagram. Okay, so this is the pipeline, and if I do the same thing, like call the fit transform here, but on the pipeline 2. Okay, now if I run it, here you can see, here I got these values. There will be a little bit difference in the data, because here we are using the mean strategy, but here we are using the median strategy. So that's why a little bit difference will be there, but mostly the distribution remains same in the data set. So but eventually, like only the model predictions tells us like what kind of strategy we should use. Okay, and now okay, is this clear to you all? Yeah, clear. Okay, Yeah. But in our project, which one will be best in that using I all? cannot say, even I don't know, I haven't used anything, I'm sorry, like I'm pretty much behind in the project. But I can only like the basic thing which we always do is create several pipelines and do the cross validation. Whichever gives us the better result, we'll use that only. Okay, so you can do that, and that will be a plus point for you to show in the Viva.
because you have used various pipelines. Now like in numerical columns we can impute mean and median, right? But in categorical columns, what should we do? Like, what can we do? We don't have any kind of mean or median, right? So what can we use in categorical columns? Most frequent. Right, most frequent, which is mode value, right? So what we'll do is, let's create another pipeline for the numerical column. So I'll just write cat pipeline, just like for the naming. So in the pipeline, I'll simply write pipeline here, and I'll start with the list, creating an empty list. The first step would be like cat imputer, which is like I'm imputing the categorical values, and in the simple imputer I'll use strategy as most underscore frequent. So this will be the strategy. And now if I simply run this pipeline, here you can see I got this very basic pipeline with just a simple step, which is like to do the imputing the missing values in the categorical columns. How can I do this the same way earlier which we did? I'll write pipeline dot fit underscore transform, and I'll pass xtrain and only categorical columns here. Okay, this you should like keep this in mind, and that's it. Now if I run it, and here I got the transform data set. Now I can check the values, like do we have any null values also. Okay, so it doesn't have. Let me create the data frame of it. So is null dot sum and dot sum. Now you can see I have 0 missing values. Earlier, like in normal data set, if I check in Why extreme we terms, use dot sum twice? dot sum, first sum is giving me like sum of each column. Okay, then I'm summing Okay. all of this, like it is resulting me with the series where first like the index represent the column names and the respective values are like the null values. Then I'm summing up that series only. So here if I do dot sum, like in the default dataset you can see we have 5,000 and like almost 6,000 missing values, but now we have 0 missing values. So this is how a categorical pipeline we are defining here. So is this clear? So if there are missing values in terms of blank or comma or question mark. That you have to first convert them into np.nand and all. Okay, okay. That's the like same thing which they said, like we have either question marks or something, we have to do it in eda. Okay, just give me a second. Okay, till now do you guys have any doubt? You can In categorical variable, we don't do this scaling, right? no, we can do, but first we have to convert these into numerical values, then only we can do the scaling, right? um like we cannot scale the strings and all, right? We have to convert them into numbers. So what I'll do is okay, so let's start with the like some more things. Let's transform these categorical values into numerical values. Okay, so in the pre-processing API only we'll be using ordinal encoder, and let's use the one-hot encoder too. Let's just import it as of now. We'll use this also. Okay, now here we have this pipeline. Let me define another pipeline, cat pipeline 2. Okay, 2. But now let's have some like one more step, which is cat odd encoder. If I, or I simply write odd encoder, ORD encoder, and here I'll just pass ordinal encoder directly. And just to like handle the some other values which we might get, I'll just write handle unknown, and
Okay, not handle unknown. Let me check once. Okay, use encoded value, right? So unknown value minus one. Yeah. So I'm just doing it for the purpose of like when we get some new values in validation or test data set. Let's say names. Names are like, let's suppose names are unique. So in training data set we have only several names, but in validation set we may get some new names. So that's why I'm using the encoded value only. And if there are like any new values, I'll just replace them with -1. Or let's suppose 0, but I'm not using 0, I'm just using -1 here. Now if I run it, you can see I got this pipeline with 2 steps. First one is this imputer, second is ordinal encoder, and here you can see these are the 2 steps. Now I'll do the same stuff here. Okay, let me like, yeah, so this I got earlier. I'll simply write down it. Let me copy it here also. Instead of cat pipeline, I'll use cat pipeline 2, and if I run it, here you can see I got all the values in numerical values, like all the columns are transformed into numerical columns. So is this step clear? This much? Yeah. Okay. If anybody has any doubt, they can just interrupt me in between. No worries in that. Now Right. From in first we in the first code we, its second is clear. In first line you for pipeline you write. Please show me the okay. yeah. First is simple imputer most frequent. Okay, okay, clear. Thank you. Okay. Okay. So now then let's say Why we use these unknown values? okay, that parameters. Yes, yes. So Handle unknown yeah, use in coded let's values. suppose in our training data we have like we have some names. Let's suppose we have some names like Aman or RN. Let's suppose we have only 2 names in the data set as of now in our training data set. Okay, and that ordinal encoder basically creates a map, like it map each value to some integer, like it maps 0 Aman to 0 and 1 RN to 1. So in a test data set, let's suppose we get some new name, let's say Karan. Okay, there is no value like there is no mapped value for the Karan in our uh, transformer, basically in our ordinal encoder, right? So that's why I'm handling that stuff here. With this line I'm writing a handle unknown by just using encoded value, and if there are any unknown values, I'll just replace those values with -1. Okay, so I'm replacing current with -1. I can even replace current with 0 or any some other value. I'm just replacing it with -1. So that's why I'm using this 2 parameters here. Is it clear? Okay. Okay. Now okay, let's move This forward. handle unknown encoded value. What is the meaning of that? uh, Unknown value is -1. Okay. This is the -1 first parameter. by default handle unknown gives us the error, okay, if there are any unknown values. So I'm Okay, just okay. there are like two types of there are like two values. If I check the signature, here you can see in the handle unknown we can set only two values. By default it is error, and the second is use encoded value. If I use the use encoded value, then it will like uh, We'll have to give use the the, value. yes, then we have to give the value in unknown value, and it will use that value as an encoded value. Okay, Okay. so this is like the same as documentation. I'm just reading the documentation here with the just question mark sign. Okay, now let's suppose in the categorical columns, as earlier like we have did, I'll separate columns in two parts. First is like ordinal encoder, odd columns, and then How to see documentation in collab? in Sorry to collab interrupt. by default like
node, like we can see the signature of each and specific function, or let's say class. How? Just by writing the name. Like first I will write question mark, then name. Okay, this is how in Jupyter Notebooks we can see the complete signature of the class. This basically shows us the documentation, which whatever we have here. Or we can, like in Python we generally use help, right? So this is same. A little bit difference is there, but mostly this is same, the help and the question mark. Okay, now let me like separate ordinal and columns and one hot encoded columns. How I am doing, like I'll do this. I'll write I for I in cat columns if x train cat call, okay, not cat call, like I'm finding the unique values here, and if the unique values, like if there are more than 5 unique values, like greater than 5, then I'm using all, like then I'll do the ordinal encoding on all those columns. Okay, if there are like less than 5 values in the specific column, then we will do one hot encoding there. Let me define for the one hot also. Oh calls I for I in cat calls if I not in ordinal columns. It is like I'm just doing the complement of ordinal columns here. Like we have all categorical columns here. Some are in ordinal encoder, and the rest columns which are not in ordinal encoder, ordinal columns, I'm like storing them in one hot encoded columns. So these are all the columns for which we'll do the one hot encoding. पर So इसका कोई लॉजिक तो नहीं बना परम, जैसे हम ये कहते हैं okay. कि ऑर्डिनल तो वो होता है ना जो ऑर्डर कर सके. Yeah, You are doing on the basis of number of unique number values. of unique values, but I'm just like doing the transformation from categorical to बस तुम numerical फॉर द values. सेक दिखा रहे हो ना, ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं ना वैसे, No, it doesn't है ना? like as such कि हमें यही use करना चाहिए something, या सिर्फ यही way है. We can use various ways. So it's kind of like feature selection also you are doing a little bit, right? So हाँ, पर इसको मतलब इसका क्या यूज रहेगा अगर हम जैसे I'm just like यूनिक वैल्यूज separating मॉडल. I'm just separating few नहीं. columns so that I can implement both strategies, so one hot हाँ हाँ, encoding बस and करके ordinal. दिखा रहे हो, ऐसा Right. तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉजिक वे होगा ऐसे करने का, No. Sometimes ना? like it helps, sometimes it doesn't help. So it's up to ठीक the है, usage. ठीक. Let me define another pipeline. And also, why only 5? We can do for 6 or 4. Yeah, That is we can do, but like we have already, let's suppose we have these many columns. If I check the length, so we have 23 columns. If I multiply it by 5, so I'll get like more than the 100. Yeah, so 115 columns will be there if I am using the 5 threshold here. If I'll use like any 3, then we'll get some less new columns. अगर जितने ज़्यादा columns होंगे, then it will take more time to compute. Like model will take more time to do the training and all, right? So No, that's but why splitting it, you are saying कि categorical columns में थोड़ा like some of the columns you are applying ordinal encoder and some of them are applying one hot, is it? right. I'm just That doing you're splitting, that is you're considering some columns under one category. right. we So we we can even we can even do ordinal encoding for all of them, right? right. It's up to us. It's not like Okay. okay, let me just use 3 here because we already have 80 columns. Okay, so I'll just like create based on these. So if I have set 3 here, so like for each of these values we have like for each of these columns we have 2 unique values. So 1 2 3 12 new columns will be made, okay, by these 6 columns. So now let's do this cat pipeline. But I'll write cat pipeline 3. Let me write pipeline, and I'll initialize a list, and I'll simply, okay, first step is same, simple imputer. Let me copy this. The second step is oh
encoder, which is one hot encoding, and I'm just writing one hot encoder. And here like for the same I'll write for handle unknown. Okay, let me check once. Okay, hot encoding. Okay, handle unknown, I can basically simply ignore. Yeah, I can ignore those values. So This handle unknown will come into picture for the test data, right? yes, for the test and क्योंकि validation train data. data में तो सब it knows everything. Right. Okay. So now let me run this pipeline. So this is the pipeline which we have created here with 2 steps. Okay. Now let me call this pipeline on my one hot encoded column. So I'll just do fit transform, and here I'll in xtrain I'll only select OH columns which are on those columns which I want to do the one hot encoding. And here you can see, okay, I get this. I have to write like sparse equals false because sparse output false, because by default I get a sparse matrix that you can say I am getting like a generator kind of a matrix. So no need to go into the deep of this. So here I got these new columns, and if I check the shape, you can see I got 14 new columns. Okay, out of those 5 columns only, like 6 columns, I got 14 new columns. So 1 2 3 4 5 6. So that's why we use one hot encoding less compared to the ordinal encoding, because it generates a lot of new columns. Okay, now is this step clear to you all? Is it clear, guys? Okay. Now what we will do is let's combine all of this. Okay, like from the numerical features, like from here this first pipeline to this these 2 pipelines. So let's create like various pipelines that we can say. First is num pipeline. Okay, equals pipeline, and here in the num imputer I'm just using simple imputer, and strategy, let's suppose I'll use median. Okay, in the numerical pipeline I'm just doing only this. Then we have another pipeline which is for the ordinal. So cat odd pipeline, let me write it as like this, odd pipeline. And then here let me define my first step, which is obviously imputing cat imputer, which is on the simple imputer only, using strategy as most frequent. So strategy most underscore frequent. This is just a one step which we are doing here. Then the second step, with what we can do is I'm just using the, like for the ordinal I'll use this one. Okay, I'm just copying this. And then a third pipeline which is OH for the one hot encoding pipeline. And then this then let's define the first imputer. Let me copy it directly. Okay, then the second step is this one. I am using the one hot encoder. So here I have defined all the 3 pipelines which we did earlier in like each of the step. So this code is clear to you all? If you guys have any doubt here, you can just ask, like, should I move ahead? No, we combine all the. Okay, okay, that's great. Okay. So now same thing for the pipeline. अगर मैं normally like इन तीनों pipelines को ऐसे call करूँ, so I have to like call the fit transform on every, like on each of the selected columns, right? On each of the pipeline, on 3 pipelines I have to call the fit transform 3 times.
So what I can do is I can instead like create a column transformer. And what is that? Let's look into this. It basically combines various transformers into one, so that we don't need to do the same thing again and again. Let me import it first. So for the column transformer, from sklearn.compose, we have column transformer. So this is the column transformer. Let me just copy it and write it here. Okay, let's run it now. uh, I'll simply write transformer. Okay, in the column transformer, same as the pipeline, we have to pass a list. Okay, and the list of the pre-processing steps, or we can say the transformation steps. uh, how like, let's start first. Let's do the like numerical transformation, which is, okay, for the numerical transformation I can simply write num transformer. Okay, yeah, let me simply write num, not a big name, num. Then I'll simply pass the pipeline here. Also, I'll pass the columns which on which I have to use this pipeline. I have to use this pipeline only on numerical columns, right? The num pipeline. So I'm passing this as a third parameter in the tuple. The same thing we will do for the rest of the two pipelines. Let me write ord, okay, cat ord. That would be much better. Then I'll write the cat ord pipeline, and here let me pass cat, not the cat columns, ord columns, because I am doing the ordinal encoding on some specific columns. And same for the oh also, one hot encoding. I'll write cat oh pipeline and oh calls. So this is a transformer I have created. Now if I run this, here you can see I got these three things. Okay, let me not, yeah. So this is the like complete transformer we have. Just like here in the pipeline we are defining some steps. Here I have defined three pipelines, in which each of the pipeline we have some steps. Okay, so these three separate steps will be like, this will be computed separately. Okay, first one is simple imputer. This is like for the num, which I have written here, num. Then cat over, which is like for the categorical columns for doing the ordinal encoding. Then we have cat oh, which is like doing the one hot encoding on categorical columns, and all these steps. And after that I'll get just one like one data set which will combine all of this. Okay, let's see how. Like agar, okay, if I have to do here, then I'll get three separate data sets, right? And then I have to do that pd dot merge and all to combine three transform data set. Am I right? Agar मैं three different pipelines पे I'll do the transformation, then I'll get three different separate data sets, and I have to uh, merge those data sets into one, right? Guys, Yeah, yeah. Yeah, ये भी आ रहा है. right. Right. And then that thing like वो merge करना and calling all these pipelines separately, rather than this I can use the column transformer. This is something advanced. Okay, a little bit advanced. In this column transformer I am passing the name first, then the pipeline, and then the columns on which we have to do the transformation. Okay, same thing I'll do here. Transformer dot fit underscore transform, and I'll write x underscore train. So here you can see I got the complete data set here, and if I check the shape will be, of course it will be bigger. So I have 87 columns now. Compared to the 80 columns, I have 87 columns. So That is because of one not encoder, right? right. So this is what, How 87 is okay, for the numerical columns. Okay, let me, means why columns are getting increased?
len of ORD calls and OH calls. So I have these many columns and let me sum it directly. मुझे ऐसा लगता है कॉलम ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि ऑर्डिनल कॉलम्स में तो हर एक यूनिक वैल्यू का Yeah, no, होगा। column okay, added. for अच्छा the नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, yeah, ऑर्डिनल कॉलम का एक ही सिंगल कॉलम होगा, 1 right, 0 जो भी लेबल होगा। हाँ ठीक है। आपने कैटेगोरिकल कॉलम्स नहीं लिए ना इसमें? ओ दैट इज ऑर्डिनल कॉलम्स एंड ओएच। हाँ ओके हाँ, ओके ओके। yeah, I ओएच have them, कॉलम में इसकी वजह से ऐड हुआ है, वन हाँ हॉट या right, कोड की 6 वजह से। या and here I have okay 85. I'm like मैं कुछ सम थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ but like in one hot encoding. Okay, so these are the OH columns. Okay, right, we have 6 columns here and हर एक column पे let me check the data once here. Okay, it's trained only on the OH calls. So these are the columns we have and unique value ऐसे तो नहीं निकलेगी खैर. It will give me the error. For each I have to check. Okay, let me check the number of unique values which I'll get. Okay, strain I dot unique for I in strain. So these are all the okay unique values I'll get and okay, let me write it. The unpacking here. Okay, I can just flatten this list also. P dot flatten. Okay, array for array we have रेवल नाम का एक फंक्शन होता है ना, array. Sorry. रेवल नाम का एक फंक्शन है Oh ना। yes. There was a function for variable also. Okay. Okay. पहले तो मैं ऐसे देख लेता हूँ. I am getting an error setting an okay. For this ordinal encoder. Okay, so these are all the values which I'll get. These two here, 2 here and 2 here, then 3 here, 2 here and 3 here. So like if I simply submit okay 2 4, okay, this is the nan. Okay, you can ignore this nan one. 2 4 6 and 3 9 9 to 12 and then 12 plus 3 we have 15. So 15 here if I write like for the ordinal one hot encoding columns I'll generate like by this transformer, this pipeline will generate 15 new columns. So if I sum it, okay, I'll get 18. Okay, कोई It was missing 14. value It was होगी. 14. Yeah, sorry, it was 14. So I have these 87. So this is the like exact number of columns which we are getting, and I can also like convert it into a data frame. Okay, sorry for the insert. Kalamji, my question was why these columns are getting added? Getting added means like they are merging into one data frame. हमें सेपरेटली एक एक डेटा फ्रेम को दो करके मर्ज करना पड़ता, राइट, फॉर द एंड लाइक नहीं, एंड जैसे मॉडल हमने वन हॉट कोडिंग किया तो वन हॉट कोडिंग में नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो गए, ऑर्डिनल में डिफरेंट हो गए, ऐड होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट, तो बट ये मैं मतलब इसको समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों ओके सी इंक्रीज। हमने डेटा को पहले डिवाइड किया. लेट मी लाइक शो यू दिस. So we have divided the data into 3 separate parts. First is numerical columns, second is categorical but ordinal columns, right, then one hot encoded columns, right. हमने data को 3 parts में divide किया and on the first part I just did the imputation, on the second part I did the imputation and encoding, and similarly on the third part
I did the same thing. जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे ना, we'll get 3 different data sets. बट हम 3 डिफरेंट डेटा सेट्स पे तो एक मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते, राइट? वी नीड ओनली 1 डेटा सेट, राइट? So that's why this transformer, what it is doing, it is combining all these generated data sets into one data set, which I am getting here. Okay, so here you can see these like from 73 to 86 we have these one hot encoded columns, then we have some ordinal encoded, then from like 35 we can say like till 35 we have these numerical columns. Okay, because okay 36, yeah, we have 36 numerical columns, so these are like first 36 columns are numerical columns. So हमें एक final data set मिल गया, अब इस पे we can train the model. Okay, so this is what transformer is doing. Transformer is applying the fit transform, and also like it is merging the data set. Okay, let me show you once again. Is this clear, like how it is working, column transformer? Just जिसको clear है please like give a thumbs up or speak. Okay, let me show you. Clear. Just one thing, let's say okay, we have column transformer here. Okay, let me write it here. This is the column transformer, and in the column transformer I have 3 things. First I have numerical imputer. Okay, and in the categorical columns, like in the ordinal categorical columns, I have the odd imputer, and for this third data set I have this OH imputer. So here what we are doing is, हम अगर एक एक को like separately करते, so हमें पहले इस पे fit transform कॉल करना पड़ता, right? देन हमें इस पे करना पड़ता फिट ट्रांसफॉर्म, देन हमें इस पे करना पड़ता, एंड देन इसका लेट सपोज इसका डेटा आया हमारे पास, वी स्टोर्ड इन ए, देन इसका डेटा वी स्टोर्ड इन बी, देन इसका डेटा सेट वी स्टोर्ड इन सी. अब हम इन 3 डेटा सेट्स पे सेपरेटली तो हम नहीं कर सकते ना. व्हाट वी हैव अर्लियर इज वी हैव वन डेटा सेट एक्स, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा वी आर डूइंग द डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग. देन वो 3 पार्ट्स को वापस से हमें कंबाइन करना है. Like either if I don't use a transformer I have to call pd.merge on all of these. Okay, तो मुझे ऐसे pd.merge वगैरह कॉल करना पड़ता. rather what I did is I use this transformer. इसने अपने आप जो है ये सारे steps कर लिए, like this one to this two and this two. So I'll get my final data set x again back, but now it is transformed. So this is what column transformer do. Is it clear? अभी क्लियर है सबको? yes. ओके, बाकी किसी को कोई डाउट है इस पे? अभी हमारा सेशन और कितना लंबा चलेगा? ओके, अभी आई गेस 1 hour. 1 hour और? राइट. बस ये खत्म हो गया, देन वी हैव द इंटरेस्टिंग पार्ट व्हिच इज लीनियर रिग्रेशन. मैं उस इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए ही बैठी थी. Okay. Right. Could you show the transform again, please? Yeah, sure. Transform code. This is the transform code. I'll share Right. the code. Instead of merging, we directly call transformer such that it Right. will. It will do everything for us. We don't need to do anything explicitly. Then again on the transformer, what I can do is I can create a final pipeline which is model pipeline. Okay, and here what I'll do is, okay, let me let it be there. Let me let it be there. Then in the model pipeline I am defining a new pipeline here, and in this pipeline first I have the transformer, where I am just writing the transformer here. Okay, then we have our model, which is linear regression we are using right now. हम linear regression use कर लेते हैं. Okay, now if I call this model pipeline, okay, linear regression is not defined. Guys, just तो open close bracket आना चाहिए ना? Yeah, linear regression open close bracket.
Yeah. Okay, sorry. Now we have like the linear regression. Let me define. Sorry. Let me import it. So I'll just copy it from here. Okay, not there. Okay, we have a lot of code here. Yeah. In this, let me import it from sklearn.linear model. I'm doing import linear regression. Okay, so this is the linear regression which I have defined like here. Okay, I have to call it. Yeah, you were right. Transformer I don't need to call explicitly, I think. Maybe I am wrong, maybe I'm not. I don't need to call, sorry, because I have already defined it here. Yeah, so now what I'll do is, here you can see now आपको थोड़ा clear हो गया होगा. This is the final pipeline we have. In this pipeline we have one transformer which is transforming all the data, and then we have the linear regression जिस पे हम prediction करेंगे. Now this is the model pipeline. What we directly do is I'll simply write model pipeline dot fit x train y train. It like it did the training. Now our model is trained. Our like जितना भी ये सारा process था from this cell, this thing, and like the separate training, all of this is done via only a single line, which is this model pipeline dot fit, and I have just passed this parameter. Okay, now I can do the now I can do the predictions also. So like model pipeline dot predict, I'll pass x valid, and it does the prediction pretty well. So this is the complete pipeline. Is this clear to you all? I know काफी high level stuff हो We गया, are having the थोड़ा high level like Only ज़्यादा in लग रहा fit होगा. we in the are. last We are using the fit. This fit Yeah, fit means because we we are only have computing, na? Then we don't get that values anywhere. सी फिट But इसलिए क्योंकि जो अब लास्ट स्टेप जो हमारा है ना लीनियर रिग्रेशन, इन लीनियर रिग्रेशन वी डोंट हैव एनी फिट ट्रांसफॉर्म. ओके, सो दिस फिट बिफोर रनिंग दिस फिट लीनियर रिग्रेशन का फिट, इट विल रन ऑल ऑफ दिस, देन ओनली ये फिट रन करेगा. ओके, सो दिस पाइपलाइन विल डू एवरीथिंग फॉर अस ऑन बाय ओन. We don't have to do anything. So this is the And before pipeline. this, before this step, we are already fit transforming the column transformer, No, right? no, 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 वो मैंने सैंपल के Not लिए किया required, था. huh? It was a Okay, sample. okay, I can okay. So write not required. yeah, it is not required. It was a like I was giving a step by step explanation. No, that's why. नहीं आपने इधर transformer dot fit transform Yeah, extrain करके that लगाया है ना? That is uh, not required. no, 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 that is not required. Let me, what I'll do is let me define one more transformer. Okay, that will be better. So this last step is only the one which we need. Right. So this is like the transformer 2. Okay, I'm passing transformer 2 here. It is a new transformer. I haven't called any fit or fit transform. Okay, okay. I'm just transformer 2, and if I run it, here you can see this is the transformer and model dot fit, and here the predict. So actually, पहले we are defining all the pipelines, Right, different types of pipelines. Then we right, are defining the transformer, right. and we are not fitting anything Mhm, at each of the stage. Only the mhm. last stage, maybe we are fitting everything in another pipeline. Right, right, right. So Okay. let me write y valid How can prediction. I add a feature selection in between? Okay, for Because adding I a am in feature, the project, I stuck in 0.82 accuracy, and I uh, could not improve in that. Then maybe I could add on the feature selection in between. Then how can I? okay, just a second. See, आप क्या कर सकते हो, like if you have this transformer, first call the transformer, transform the data, then on that you can do the feature selection. Okay, basic step तो ये हो गया. Then अगर आपको like feature selection करना है, उसके लिए ना like we have the mutual info, variance threshold and all that, right?
but uska, like for that we have to write a lot more code, like to make those functions fit and fit transform. क्योंकि in mutual information in various variance threshold we don't have the similar functions. So उसमें जो है थोड़ा सा हो सकता है. Obviously there may be some third party libraries too, but I'm just like showing you just simple example. If you have this transformer here, then you can do the feature selection after that also, like after transforming the data set. Feature selection is the last step, right, before the model training. और Yeah. आई लाइक मुझे एक वे पता था बट आई एम नॉट लाइक मुझे याद नहीं आ रहा, सो डैट्स वाई कुछ गलत नहीं समझाना चाहता, इसलिए आई एम जस्ट स्किपिंग इट, बट आई विल ऐड अ Yeah. कोड सैम्पल इन द नोटबुक. ओके, Okay. Okay. सो इज दिस क्लियर टू यू ऑल, whatever we have done here? Let me write y pred still 5, so I'll get only the first 5 prediction. So is it clear, guys? लास्ट में आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? You're predicting. Yes, I'm predicting and I'm just Oh, checking the first 5 using the prediction. validation Yeah, data right, set. right. And the Okay. same thing I can do for the test also. So if I do test preds model pipeline dot predict test underscore df, and I can write test spreads of first 5, and here you can see I got the test predictions. So everything is done in like in just one line, you can say. Of course there are some few lines also here, but आपको separately x valid बार बार fit transform कॉल नहीं करना पड़ रहा, right? जैसा like if you have seen my earlier sessions, fit transform I am calling, and उसमें मुझसे mistake हो गई थी कि like I was calling fit transform on validation and test data too. So by creating pipeline we can like and we'll get a surety कि ऐसी कोई mistake नहीं होगी. So that's why we create pipelines. This is And do we really need to use this feature union anywhere? उसका feature क्या union is same advantage? as column transformer. Okay, Okay. it is same. Feature union, column transformer, both are same. Working थोड़ी सी अलग हो सकती है, but at the end input is same, output is same. Okay. Okay, there is nothing like not much difference, just that column transformer industry में ज़्यादा use होता है, so that's why मुझे like I'm using this from starting, like जब से I have learned this, so that's why column transformer I have the habit to use this. So is this all clear to you? Like everything is clear to you all? Yes. Okay, so we have the, okay, should I do the predictions? Let's skip the predictions as of now. Now let's go to the this one, which is linear regression. Okay, so that this will be like थोड़ा बड़ा होगा, टाइम लग जाएगा शायद, but yes, we don't have any live session today, so that's why मैंने आज ये सोचा I'll cover the week 4 complete today. See, in linear regression, okay, how many of you know about linear regression? You can give a thumbs up if you know. Okay, Abhishek, yeah, right. Okay, Radha also. So see, we have various models in machine learning. Okay, मैं आपको थोड़ा सा overview दे देता हूँ. What kind of models do we have in supervised learning? I am just writing. Okay, we have like linear models, tree based models, and some other models also like SVM and all of that. Okay, or naive Bayes. So mainly these two models like are used in industry. And in linear model we have like the base model, which is linear regression. Okay, okay, linear regression, and based upon that we have various models like polynomial regression, ridge regression, lasso regression, and all that stuff. And in the linear model also, based on the linear regression, we have logistic regression. Okay, so these basically linear regression is for regression stuff, like to calculate the
continuous variable, and logistic regression is for to calculate the discrete values, that is like doing the binary classification, like doing the classification stuff mainly. Okay, so this is the difference between linear regression and logistic regression. And we have tree based models also, मैं उस पे अभी नहीं जा रहा. Tree based, in tree based we have decision tree, random forests, boosting models, bagging, boosting, a lot of this. So today we will be doing the Param here. linear regression. Param, yes. Param, हाँ बोलो. Param, अमित, आवाज आ रही है? yes, you are audible. हाँ, आवाज आ रही है मेरी? मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन और हमारा जो कंटिन्यूअस है, दोनों लीनियर रिग्रेशन के अंडर ही आएंगे. Not the linear regression, that is like these are two different you can say things we do in supervised learnings. Okay, and we can achieve it via like linear model. Okay, what I like why I'm writing logistic regression under linear regression, क्योंकि logistic regression is based upon the linear regression only. There are just few modifications. Okay, base equation is same, everything is same in logistic regression and linear regression, just that there are some modifications which led to like give us a classification model instead of a regression model. So that's why like linear regression के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे. Okay, so before like doing that, let me create one more whiteboard. There are some notations which I have to tell you. First is basically x and y. X is our data, we can say training data for the data we have to train. This is the target label, right? Then if I say I, like okay, before I, m represent number of number of samples we have, or number of rows we have. Okay, sample or rows, and we have a number of features. Okay, so these are some of the notations. And one more, if I say like x of I, then I am asking for us, like I am saying ith row of x data set. Okay, if I am saying xn, so n in subscript, I in superscript, then I am talking about nth feature of the, or nth feature or nth column of my data set. Okay, so these are the basic notations. Is this clear? I'm just like building up the base first. Okay, so linear regression, as the name suggests, it is a linear model. What a linear model is, let's suppose we have some data here. Okay, we have size, and here we have price, and I have plotted a scatter plot. Okay, like this. So here what I can do is, अगर मेरे पास like for each size I have some corresponding price, we can take the example of house price data set. Okay, हर एक house के size के लिए I have some separate size. So what I can do is I can fit an estimator, like इसके बेस पे ना I can define a machine learning model which basically fit a line to it, like this. Okay, so अब क्या होगा, अब if I have let's say मेरे पास कोई एक new sample आया data का, on which I have some size, let's suppose this x, तो मुझे क्या करना है, बस इस line के बेस पे देखना है what is the specific price which is intercepting on this call on the y-axis. So this will be my price for the new size. So ये कैसे predict हो रहा है, this is predicting via this line, and this line is we say as linear regression. Okay, and देखो we have this data set. Can I copy this? Okay, I can't. And this line will be having the weights and the intercept, right? Right, that I am And also about to. ये जो data है x का prediction हो रहा है, it is only, it need not be exact. Right. Correct. Right. It is approximate. Right, it is approximate, it is not the actual. Okay,
So हम देख रहे हैं अभी एक्चुअल और इसका क्या फर्क है. That will be your error, loss, y cost, y true minus y predict. right. And उसका scoring करने से we know the accuracy, right? राइट. सो ओके, मैं धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट पे बढ़ता हूँ. सी, ये लाइन ऐसे भी फिट हो सकती है, लाइन ऐसे भी फिट हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. वी डोंट नो लाइक हम ना एक मशीन लर्निंग में लाइक वी कैन स्टार्ट विद सम बेसिक लाइन लाइक दिस. देन वी हैव टू ट्रेन आवर मॉडल सच दैट कि ये लाइन जो है बेस्ट फिट हो जाए. बेस्ट फिट मीन्स कि it will minimize the error. What do you like, what I mean by minimizing the error? I was about to like make one graph for this, but I don't get the time. Okay. Okay, let's suppose this. So let's say I have this graph and I have some data samples here. Okay, now I have fitted a line here. This is the line, let's say. ये मैंने एक लाइन फिट कर दी. दिस इज़ माई साइज एंड दिस इज़ माई प्राइस. अब मैंने ना एक न्यू साइज मेरे पास आया और मैंने उस साइज के बेस पे मैंने प्राइस प्रेडिक्ट किया. वो मेरा यहाँ पे आ रहा है कुछ. ओके, आई कैन डिफाइन इट एज वाई हेड. ओके, या वन मोर नोटेशन फॉर डिफाइनिंग द प्रिडिक्शंस. दिस लाइक y is the target variable and y hit is the predicted, you can say predicted values. Okay, so whenever we use y hat, this means we are we have the predicted values. We don't have the actual target values, target level. So this must be like, this must be clear to you all. So let's suppose मेरे पास ये आ गई y hat की value. Now you can see अगर मैं इस x को if I create the line here directly, so मेरा ये इस पे जा रहा है. So if you see there's some like difference. जो मेरा एक्चुअल इस साइज का जो प्राइस है वो यहाँ होना चाहिए. ओके, विच शुड बी दिस, बट आई एम गेटिंग दिस. सो ये जो डिफरेंस है ना इतना, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर, और यू कैन से ओके एरर, or you can say cost, or you can say loss. So this is the difference, we say it is a loss. Okay, yeah, it is the error. ये जो हमारा ये जो difference है इन दोनों में, like here we have this much difference, here we have this much big distance difference, and here we have this, and यहाँ पे हमारा कोई difference नहीं है, here we have the correct value. Okay, but यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे we only have let's say like 5 to 6 samples are here, but and while training the model, like we have thousands of samples, like this above one. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे samples हैं. Let's suppose this sample size is m equals 10,000. so अब 10,000 के 10,000 को तो एक लाइन like एक लाइन अच्छे से 100% accurate predictions नहीं दे पाएगी, right? So we have to fit the model in such a way कि हमारे error सबसे कम हो जाए. Means let me create another slide. थोड़ा सा just bear with me for 5 to 10 minutes, then your concept will be completely clear about linear regression. So this is the model, like okay, this is the data we have. Okay, and the same thing I am like doing here. I can't copy this. अगर मैं कर पाता तो okay, can I take the screenshot? That would be better. Yeah. Okay, upload. Okay, I have to do it manually, not the snap picture screenshot. This. Okay, it is taking time. Never mind. So okay, I can't even write. Yeah. Okay, leave it. Yeah. It is uploading and it is taking time. Okay, let me reload it. So yes, let's suppose I have this data set here. Okay, and ये मेरे जो है these are some values I have defined. Okay,
now I have, let's suppose मैंने ना मेरे पास same data set है, like you can assume I have all these values similar. Okay, अब I can define line in like various ways. How? Like either I can define line like this or like this, or let's suppose like this. So based on the intuition, which you like, which line you can say is the best fit to the model, like which line gives us the minimum error, A, B or C? Which line do you think will give us the C. right? C. So why C? Because अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे we have like error here, difference here, here, and like we have a lot of difference here. Same for here, we have some difference here, and but in B we have less difference compared to the A. ये हम बस data देख के we can tell because we have few number of samplers. Amit, can you turn off your mic? So It's very noisy. But in C हमारे पास बहुत like difference है, we have difference but we have very less difference compared to the A and B. So this is, we can say this is the best fit line, like we can say this line is best fit. And this like line कैसे fit होनी चाहिए, this we have to compute. And how? Okay, आपको लीनियर, हमने लीनियर इक्वेशन बहुत बारी like सीखी है. लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला like क्या होता है? It is mx plus b, right? For fx it gives us mx plus b, which gives us y. This is the formula for linear equation, right? Am I right, guys? yeah, right. Yeah, Yes. right. Y is equal to mx plus c. And m क्या है? हमारा slope. Slope. b हमारा है intercept. Here we are defining a line, and then we also have the same things. And what is like all this intercept basically tells us कि y axis पे हमारा कितना ऊपर नीचे होना चाहिए. So this is like 0 1 2 3. If I have b equals let's suppose 1, तो मेरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी. If I have b equals 0, then मेरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी. Okay, so this is the intercept. And slope basically tells कि how much slant our line, कितना slope होना चाहिए line का. Okay, so like if we have some higher positive slope, then our line should it will be like this. If we have slope equal 0, then our line is like a constant, right? If we have negative slope, then हमारी line ऐसी हो सकती है. So am I right? Like this is the basic things, right guys? Right. Now let me interchange these terms a little bit. fx मेरा same रहेगा. Instead of m, I am using w. Okay, and x's remain same, b remains the same. Okay, and y I am having y hat because this is the predicted value, and this is the equation for the linear regression. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पहले भी पढ़ी थी, like हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं. दिस इज द लीनियर इक्वेशन, like equation for a line, and यही linear regression की equation है. Yes, this is the linear regression equation, but to find the best value for the slope and for the like intercept, we need to basically this is where our model training comes in. Okay, and okay, अब मैं W और इनको ना थोड़ी सी मैं और notations like आपको बता देता हूँ. W is, we can say, weight basically weight is same as slope, there is no difference, just that name हमने, it is like this naming is in mathematics and this naming is in machine learning specific. And we have so many, when you check the weights, we have so many weights, no? Right. Oh, because of the For dimension each of the feature, data point, right? yes, for each feature we have a single weight. Okay, so this is all about like the basic linear regression. आपको इतना clear हो गया guys? Yeah. Okay, now मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, बहुत कुछ है. So let me run this. I have prepared a notebook. Okay, so what I am doing here is, okay, let me zoom it. Not yeah, this much is pretty much clear. Line numbers also accept. So now you can see this code, right? I am importing some libraries. You can ignore these imports and all. आपको इन सबको देखने की जरूरत नहीं है, just basic imports हैं. Okay,
दिस इज द फर्स्ट सेल एंड ये मैंने कुछ और लाइंस लिखी हैं फॉर यू टू रन लोकली. ओके, देन आई एम जनरेटिंग दिस डेटा सेट. साइकिट लर्न में एक फंक्शन है जो डायरेक्टली मुझे रिग्रेशन वाला डेटा सेट देता है, ठीक है, जिससे मुझे कस्टम डेटा सेट बनाने की ज़रूरत नहीं. सो मेरा जो डेटा सेट है इट इज़ ऑफ 1000 सैम्पल्स एंड 5 फीचर्स. ओके, सो मैंने यहाँ पे वही पास कर है 1000 सैम्पल एंड 5 फीचर. नॉइस इज बेसिकली यू कैन से कितना मेरा डेटा सेट स्प्रेड है. ओके, एंड आई एम हेयर रनिंग इट. यू कैन सी here I have this first 5 rows of my data set and this is my target. Okay, a target label y. इतना क्लियर है आप लोगों को? प्लीज स्पीक अप क्योंकि बार बार मुझे ऐसे मीट पे शिफ्ट होना पड़ रहा है. बट टारगेट आपने किधर दिया? x comma y make regression, so it automatically creates us the data, is it? Right, it automatically creates us the data. And n samples is equal to n samples diye, which means n samples is 1000. Yeah, n is the n samples is the m and this is the n. Okay. n. Okay. And noise क्या होता है? Noise is basically to spread. अगर मेरी noise 0 होगी ना तो मेरा जो data everything will fall in the same place. Right. अगर मेरी noise बढ़ी है तो मेरा data will be spreaded. So थोड़ी noise so अभी noise if you increase it will spread more. Right. I'll show you. Okay. I'll show you each and everything. So here what I am doing is abhi I have this like I am extracting the first feature. Okay, मैं सिर्फ first feature ले रहा हूँ of my data set because I have 5 features here. I am taking only the first feature and I am just reshaping it for the model and I am just calling the linear regression model directly. अभी थोड़ा सा bear कर लो. We will create a linear regression from scratch. Okay. Then we are fitting the data set, we are training the model basically and I am doing the prediction. मैं उसी पे ही कर रहा हूँ. I am not doing the prediction on some validation set or something like that. Okay, so this code is clear. But ये reshape क्या होता है? -1 reshaping it in some way कि जो basically linear regression में we need the data like हर एक रो के लिए ना. Okay, if I show you this one, so ये मेरा डेटा कुछ ऐसे है, right? Its shape is this like 100,0. so there are no like ये सिर्फ 1D डेटा है but while training the models like हमें जो है जो डेटा है वो 2D में basically by default we need. so I am reshaping it -1,1. By this I'll get each each data point in each row. Okay, because I am selecting only one feature, that's why मुझे करना पड़ रहा है. अगर मैं multiple feature select करूँ तो मुझे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि I'll get a 2D data set, right? Yeah. So this line is clear to you all? Yes. Okay. Now, Yeah, clear. Third line, you can ignore this function, complete function, you can ignore this. I'll tell you what it is doing. And this also, these 3 lines you can ignore. Okay, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो रहा है धीरे धीरे. So basically now look, this is a plot regression, a function where I'm plotting the data set, okay, with the linear regression line. Let me run it once. Okay, I got this model is not defined. Yeah, sorry, I have to run this. So this is my linear regression model. Okay, not the model. ये जो blue आप देख रहे हो ना, these are the scatter points for a feature x1. In the bottom you can see this label feature x1 and here we have the target label y. Okay, the same thing जो मैं आपको यहाँ पे हम कर रहे थे ना, same I have implemented here, but here we have more number of samples. Here we have 500 like I am by default I am choosing only 500 samples. Okay, so आपको ज़्यादा कोड देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना देखो क्योंकि प्लॉटिंग का है, प्लॉटिंग में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. Even I used ChatGPT here to do the plotting and all. ठीक है, so plotting का मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. so plotting तो हम कर ही सकते हैं easily. and here we have the target, here we have the feature, then blue represents this data. and okay, इतना क्लियर है सबको? this much इतना? Yes. Okay, now Yeah. we have like 2 lines. अभी आपको एक ही लाइन दिख रही है, I know,
दिस इज द रिग्रेशन लाइन, लाइक द रेड लाइन, ये मैंने लीनियर रिग्रेशन की एक लाइन प्लॉट करी है. एंड वी ऑल्सो हैव वन मोर ग्रीन लाइन जो डिफॉल्ट रिग्रेशन लाइन. वो डिफॉल्ट रिग्रेशन लाइन कहाँ से आई? वो जो मैंने मॉडल ट्रेन करा है ना, इसने जो है अपने आप बेस्ट वैल्यूज कंप्यूट कर ली हैं. ओके, एंड दोज बेस्ट वैल्यूज आर ओके फॉर द लाइन, या दिस इज या हियर. सो वो जो बेस्ट लाइन है, वो बेस्ट लाइन इसने अपने आप कंप्यूट कर ली है. एंड फॉर दैट आई एम लाइक प्लॉटिंग दिस लाइन हियर. ओके, वो बेस्ट लाइन आपको ग्रीन कलर से अभी दिखेगी. एंड दिस इज द लाइन, जो रेड लाइन है वो हमारी कस्टम लाइन है. सो जैसे मैंने आपको बोला था, सो हियर आई हैव 2 स्लाइडर्स. अभी इनकी बाय डिफॉल्ट ना कुछ वैल्यू सेट है. लाइक फॉर W it is 27.51, for B it is 0.72. so it is the best value I have set it by default. like how, like जो मैंने आपको अभी बताया था ना, this weight and bias. ओके, वेट को हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. ओके, बिकॉज वी हैव टू मैनी टर्म्स, सो इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा. बायस विच इज सेम एज इंटरसेप्ट. ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैंने जो मॉडल ट्रेन करा है ना, मॉडल का जो कोएफिशिएंट है वो मैं ले रहा हूँ, विच इज़ द W. एंड देन वी हैव द इंटरसेप्ट. तो बाय डिफॉल्ट W की जो बेस्ट वैल्यू है वो ये है, और B की बेस्ट वैल्यू ये है. सो मतलब दिस इज माई स्लोप, बेस्ट स्लोप, and this is the best bias we have, best intercept we can say. Okay, now I can play with this. I have created this interactive graph. अभी जैसे मैंने आपको बताया था. okay, इतना सबको क्लियर है अभी, like what I have told? Yes, yes. But how did you get this best W and best B? We don't need to know now. No, you don't need to do. I got this by training the model. जो मैंने यहाँ पे मॉडल ट्रेन करा है ना, मॉडल ने अपने आप बेस्ट वैल्यूज कंप्यूट कर ली. बेस्ड ऑन दोज बेस्ट वैल्यूज इट डिड द प्रेडिक्शन, एंड वही बेस्ट वैल्यूज आई हैव डिफाइंड हियर. ओके, दीज आर द डिफॉल्ट बेस्ट वैल्यूज. नाउ व्हाट इज हियर इज लाइक, देखो अभी डेटा मेरा काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है. सो इसलिए जो है इसकी बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसी ही आ रही है. अगर मेरा डेटा कम स्प्रेड होगा तो मेरी लाइन बहुत लाइक गिव्स अस द बेस्ट, लाइक मोर लेस एरर. लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मेरे x1 की वैल्यू 2 है तो मेरी यहाँ पे -250 के अराउंड आना चाहिए आंसर y पे, राइट. बट बिकॉज ऑफ द लाइन आई एम गेटिंग आंसर अराउंड -25 वी कैन से, सॉरी नॉट 25, -60 और 60 लाइक यू वी कैन से, राइट. अगर हम यहाँ से देखें -75, 80. right, -75 to 80, this much we can get here. so here also like -3 पे अगर आप देखो, so मेरा ये स्कैटर पॉइंट के बेस पे वैल्यू 100 to 150 के बीच में आ रही है, like -130, but with the line I am getting the value around -70 or -80. so this is the difference we can see. मैं प्लॉट एक बना नहीं पाया. I had a very great plot in my mind, but वो मैं कर नहीं पाया. So yes, this is the basic plot. Now जैसे मैंने आपको बताया, we have the slope and we also have the like the slope as well as the intercept. So intercept मैंने बताया था आपको कि कितना like जो y एक्सिस पे कितना ये इंटरसेप्ट करना चाहिए. So here we have 0.72. सो इसलिए जो है ये लाइक इसकी स्टार्टिंग जो है वो 0.72 पे हो रही है. अब आप लोग लाइक यू माइट बी थिंकिंग यहाँ पे तो 0.72 नहीं है. this is, you can ignore this while labels as of now, but this is the best value which I got. Okay, now if I, let's suppose if I shift it to the left, अगर मैं choose करता हूँ let's suppose -105, now you can see this is shifted here. okay, मेरे रेड लाइन नीचे आ गई है. सो जितना मैं बायस कम कर रहा हूँ ना, मेरी रेड लाइन नीचे आ रही है, एंड ग्रीन लाइन इज द बेस्ट फिटेड लाइन. सो बायस इज दिस, लाइक यू कैन सी मेरा स्लोप सेम है. स्लोप आई हैव नॉट चेंज, W आई हैव नॉट चेंज, बट आई हैव चेंज द बायस. अगर मैं बायस बढ़ाऊंगा देन यू विल सी मेरी जो रेड लाइन है वो ऊपर आ जाएगी ग्रीन के. ओके, एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो. सो दिस इज हाउ bias works in the linear regression. Is this clear? Yeah. Okay, nice. Now we have slope. So let me keep the like line by default जो मेरी line थी. Okay, so slope basically
tells us कि how much slant our basically line should be, or how much कितनी straight होनी चाहिए, कितनी slant होनी चाहिए. So by default I have the slope 27.51. If I decrease the slope, then आप देखो कि मेरी line ना straight horizontal axis पे straight होती जाएगी. So now you can see if my value is like if I set it to around 0.30, you can see मेरी line almost constant बन गया मेरा kind of line, right? You can see the difference in green line and red line. So this is how slope works. अगर मैं slope कम करूँगा, so it will go in negative. You can see मेरा slope negative है -46, तो you can see line मेरी it is starting from a high value but it is going down, क्योंकि that's how a slope works, right? अगर मेरा slope negative में है तो मेरी line start होगी from a higher value, then it goes down. And if I have the slope in positive, so if I have the slope 74, you can see ये मेरी काफ़ी ज़्यादा slant हो गई है line. So this is the slope and bias we have intercept. So is this clear to you all? This much. Okay, इसमें आपको जो confusion है you can tell me, I can help you. Guys, What bias actually does okay, bias. affect the output? Okay, I'll tell you. See, अगर मेरा bias कम है, so if I set bias is like this, so you can see मेरी red line जो है, अभी ignore the green line. Red line जो है, according to the red line, for the -3x1, the value should be something like here, right? But जो according to the data जो best fit होना चाहिए, my value should be somewhere here. So this is how bias is handling, like bias is working here. Bias basically tells us ki like how much bias is a constant, right? So जितना हम constant add कर रहे हैं, so that line is going up or down. So this is like the equation here. We have wx plus b. So bias is the constant term, and अगर हम जितना भी bias add करते जाएंगे, so our line will go up and up, and उससे जो है मेरे difference like और भी ज़्यादा create होता जाएगा. Here you can see if I am increasing the bias, then my line is going up, the red line, but the green line stays here because green line is the best fitted line. And the slope basically tells us like जितना मेरी line slant कितनी होगी, कितनी straight होगी. So this is what bias and slope do. So इसका like Right. this concept is clear? Yes. Okay. Yeah. बाकी सबको clear है? Okay, किसी को कुछ भी doubt है, you can ask, because आगे और भी ऐसे फिर this is the foundation, like building blocks. Okay, I think it is clear. So let's go to now another thing. Now here you can see, okay, let me create one more graph here. Okay, let me plot it here like this. Okay, yeah, like this. Just give me a second. Just a second, guys. Okay, yeah. So अभी इतना तो clear है ना सबको, whatever we have seen till now. योगेंद्र, श्रीजल, राधा, बालावीरा, अभिषेक, अमित. Yes. Yes. Okay. Yes. So अभी let's come to the loss. So मैंने आपको जैसे बताया था, जो मेरी लाइन प्रेडिक्ट कर रही है, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है,
the difference between this is the loss. Okay, so like here this is the loss and this is the loss. अब ये लॉस अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो ये हर एक का सेपरेट लॉस है मेरे पास, राइट. सो आई गेट एन एरे ऑफ लॉस अगर मैं हर एक का लॉस कैलकुलेट करूँगा. बट अब मुझे ना एक स्केलर वैल्यू चाहिए जिससे आई कैन लाइक चेक कि मेरा कितना लॉस, मतलब मेरा कितना डिफरेंस है between the actual values, between like these scatter points and between this green line, मेरा कितना difference है. So that I can check via loss function, which we also call as like the cost function, or we also call as loss function. Okay, basically it gives us जैसे functions का आपको पता है, it gives us only single output, right. डेफिनेशन ही वही होती है. सो कॉस्ट फंक्शन लाइक लॉस फंक्शन गिव्स अस अ सिंगल स्केलर वैल्यू. सो मेरे पास एक स्केलर वैल्यू है कि लेट सपोज आई राइट इट एज जे. ओके, सो दिस विल बी माय लॉस. सो जो भी मेरा इन सबका डिफरेंस होगा ना, उन सबको मैं किसी भी एक वे में कंप्यूट करके आई एम स्टोरिंग इट इन अ सिंगल वैल्यू विच इज जे. एंड हाउ आई एम स्टोरिंग इट, नाउ लेट्स गेट इनटू दिस. सो आई एम यूजिंग मीन स्क्वायर्ड एरर. सो mean squared error, we also call it MSC. How many of you know about mean squared error? जिसको भी पता they can give a thumbs up. Okay, so mean squared error is like what I am doing is, जो मेरी यहाँ पे like मैंने आपको बताया था, जो ये मेरी actual y value है, this is my y hat, right, जो prediction है. Same for here, this is y and this is y hat. Am I right? This is the notation which we are following, right? Yes, sir. Now mean square error क्या करता है, जैसा नेम है, नेम के थ्रू ही जाओ, धीरे धीरे will split it. So first error is the difference which is y minus y hat, we can say. Y जो मेरी actual value है, y hat जो मेरी predicted value है. Then squared error. So what I am doing is I am squaring it. Then mean means I am summing up for all the examples, okay, like from I equals to 1 till m, and I am dividing it by m. So this is the mean square error. This is the formula. Like I am going through all the samples, जितने भी मेरे samples हैं, okay, for each scatter point I am calculating the difference, I am squaring it, and उन सबको मैं add कर रहा हूँ, ठीक है. And उन सबको add करके I am dividing it by the total number of samples we have, so I'll get the mean square error. So is this clear? इतना like ये loss function का formula. Yeah, clear. You don't need to Yeah. remember the formula, but आपको थोड़ा सा बस नाम से पता होना चाहिए what it is. And जैसा कि ये squared function है, like we are doing the square, so आपको पता है like square generally, like if we have some quadratic equation, because in like whenever we have variables in square, so we get a quadratic equation. So uska jo we get a parabola, right? We don't get a line, we get a parabola. Am I right? Like Yes. जो मेरा Yeah, square yeah. होता है उसका we get a Yeah. parabola. So Right. if I plot this loss function ना, I'll get this parabola. अब आप कह रहे होगे ये सिंगल वैल्यू है j, उसके बेस पे कैसे एक पैराबोला पूरा प्लॉट हो रहा है, लाइक एक सिंगल लाइन मल्टीपल पे कैसे आ रही है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, फॉर ईच वैल्यू ऑफ w, like w1 w2 and so on till like for all the, I am taking various w's value. like let's suppose मैंने 100 अलग अलग w वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, एंड वो हर एक w वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ, विच इज fx wx प्लस b, ठीक है. और हर एक w को मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ, एंड वट एवर आई एम आउटपुट आई एम गेटिंग, मैं उस आउटपुट के बेस पे आई एम कैलकुलेटिंग दिस लॉस. ओके, एंड वो लॉस यहाँ पे ऐसे से डिफाइन हो रहा है. सो दिस इज द लॉस फंक्शन. इफ आई शो यू, this is the same mean squared error I have implemented in the code. Okay, let me run this. Now here I have defined some w values, like I am going from minus 1000 till 1000. Okay, so these are like some of my w values, and these are my loss, like their respective loss values. So अगर मैं minus 1000 करूँगा तो मेरे पास ये loss आ रहा है, अगर मैं minus 979 करूँगा तो मेरे पास ये loss आ रहा है. Now I am plotting this loss function. Here you can see this is the parabola, जो सेम मैंने वहाँ implement बनाया था, right?
this is the parabola which I'll get. Why parabola? Because it is a quadratic equation. Is this clear to you all? This Yeah. parabola. Yeah. ओके, किसी को इसमें कोई डाउट है? Y-axis is, I want to know about y-axis. Okay, yeah, I'll tell you. So in x-axis we have w, like weights, different value of w, and for each w I'm calculating the loss. So it is like j1, j2, and so on till complete like j. So y on Right. x we have the loss, and this we have the weight, or we can say slope. So this is what we have here. Here I have written MSC. I can also write loss or anything y-axis पे, and on x-axis you can see I have the slope w1 which is of feature x1. ये x1 का slope, x1 का जो weight है w1, that different w1 values I am defining, and वो same, वो हर एक value पे I am finding the predictions for all the data samples, and I am computing the loss and I am plotting it here. So this is a squared equation which I'll get. Is this clear? Guys, is this clear to you? Yeah. Okay. Now see, देखो, there are like, अब आपके मन पे like एक question आएगा, why are we like using this only, mean squared error? Why not just directly sum the losses? तो उसका एक मैं आपको simple reason देता हूँ. Like let's suppose I have 4 data points. Okay, 1 2 3 4. Okay, and I have plotted a line. ठीक है, मान लो इसका जो मेरा ये जो है y1 है, this is y2, this is y3, and this is y4. and now if what I'll do, जो मेरा y1 है, मान लो y1 की वैल्यू है मेरी 10, y2 की वैल्यू है लेट्स सपोज 50, y3 की वैल्यू है लेट्स सपोज 20, एंड y4 की मेरी वैल्यू है लेट्स से 0. ठीक है, सो दीज आर माई y वैल्यूज़. 4 पॉइंट्स की जो मेरी वैल्यू है वो है, और मैंने जो ये लाइन प्रिडिक्ट करी ना, मान लो ये लाइन मेरी कुछ ऐसी है, एंड विद दिस लाइन आई एम गेटिंग द y hat1 सेम एज 10. ओके, फॉर y2 आप यहाँ पे देखो, y2 आई एम गेटिंग अ लिटल बिट like some difference I am getting here, and that difference, let's suppose this difference is we can say, let's say 30 is the difference. Okay, so ये जो difference हुआ, okay, y2 I am getting here is let's say not 20. Okay, let's suppose y2 I am getting 20, and y hat 3 I am getting let's say 30. Okay, rather than this, and for y4 also, like आप y4 पे देखोगे I am getting this here y hat 4, और y hat 4 के लिए let's suppose okay 30 and 10 and yeah, so here let's suppose I am getting here 30 as the value. Okay, now अभी अगर मैं इन दोनों का difference calculate करूँगा ना, so for this one I'll get the difference, like अगर मैं y minus y hat करता हूँ simply without squaring it, तो मेरे पास यहाँ पे तो 0 आ गया for the first. For the second I'll get 30, for the third I'll get 10, and for this also I'll get 30. Let's suppose okay, let's suppose this is 20 only, y3 का. I'm just like explaining why we are squaring, why we are not taking the actual difference. So let's suppose this is the 20 here, so मेरा यहाँ पे difference 0 आ गया, so 30 यहाँ पे भी है और 30 यहाँ पे भी, but यहाँ पे 30 माइनस में है. ओके, तो ये 30 और ये 30 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो मेरा लॉस दिखाएगा 0, बट मेरा लॉस 0 नहीं है, वी हैव सम लॉस, तो इसलिए आई एम स्क्वायरिंग इट टू मेकिंग द वैल्यू पॉजिटिव. अब यू विल आस्क स्क्वायर ही क्यों, वी कैन ऑल्सो टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट. एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता होगी, लाइक माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी पॉजिटिव हो जाती है, राइट. एम आई क्लियर? राइट कंटिन्यू. सो एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी, लाइक मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 30 और -30, इन सब का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू पे जो है मेरा, हाँ ठीक है, मेरे पास लॉस आ जाएगा विच इज़ 30 + 30 विच इज़ 60. बट एब्सोल्यूट वैल्यू का इफ़ यू सी द ग्राफ, वो ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, वी शेप का होता है, राइट. द ग्राफ फॉर द
absolute like if we let me search it, absolute graph value, yeah. So here you can see absolute values का जो भी मेरा ग्राफ होता है that is always in positive, sorry, that is always in the shape V shape, right? अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं, so this is the absolute value, इसकी हमेशा V shape होती है. Okay, is this clear? Yeah, clear. So अब V shape पे एक बात है. Okay, I am going further. So see, in V shape what we have is like मेरा ना इस पॉइंट पे which is you can say the zero, मेरा ज़ीरो पे कोई स्लोप डिफाइन नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो के पास जाऊंगा तो मेरा जो है मतलब यहाँ से ये वैल्यू भी बढ़ी है, ये वैल्यू भी बढ़ी है, तो स्लोप के लिए लाइक वी हैव दिस इक्वेशन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, राइट? सो मेरा ज़ीरो पे यहाँ पे स्लोप डिफाइन नहीं होता इन द एब्सोल्यूट फंक्शन. अगर मैं एब्सोल्यूट ग्राफ को देखूँ तो मेरा कोई भी स्लोप डिफाइन नहीं होता एट ज़ीरो. सो इसलिए हम जो है वो नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? लाइक हम यहाँ पे इसका लाइक कॉस्ट फंक्शन का भी क्यों हम स्लोप की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ कॉस्ट फंक्शन एंड देयर इज अ कॉस्ट फंक्शन विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, जो यही करता है, rather than squaring it takes the absolute value and it divided by it sum up and divided by number of samples. But जब भी ज़ीरो आता है ना, so it takes some like it adds some precision, something like 0.01 और 1 ऐड कर देता है. so जिससे we get like error तो मुझे मिल जाएगा but we can't define the slope. so slope के लिए like we need a function जो okay I cannot like मुझे exact definition नहीं मैं बोल पा रहा, but slope के लिए we need a graph which should be like a curve मुझे चाहिए which is differentiable, like जिसका जो है डेरिवेटिव हो हर एक उस पे. like for this parabola आपको पता होगा like for the squared function जैसे अगर मेरा x स्क्वायर है उसका मेरा डेरिवेटिव होता है 2x, राइट? और वो हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है. एब्सोल्यूट वैल्यू पे मेरा डिफाइन नहीं होता डेरिवेटिव. so I want this derivative should be defined at every point. that means जो मेरा लॉस फंक्शन है वो जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. या आपने लाइक कैलकुलस के क्लास में यू हैव रेड दीज कंसेप्ट्स एंड ऑल, राइट? सो इतना क्लियर है आप लोगों को? आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, जस्ट दिस ये तो पीछे मैथमेटिकल आ रहा है सारा कि आप डिफरेंशिएबल होना चाहिए तभी, राइट? सी होल ML इज बेस्ड अपॉन लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस. सो अगर आपको लीनियर रिग्रेशन क्लियर हो गया, आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज, लासो, पॉलिनोमियल रिग्रेशन ये सब क्लियर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ बेस. सेम फॉर द ट्रीज ऑल्सो वी हैव. ओके, सो मैंने ना यहाँ पे सेम जैसे यहाँ पे मैंने मीन स्क्वायर एरर का फंक्शन बनाया, सेम मैंने यहाँ पे बनाया है मीन एब्सोल्यूट एरर का फंक्शन. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो मैं ABS यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ स्क्वायरिंग. मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा था एंड हियर आई एम डूइंग द ABS. so here I have computed the like absolute error for all the values and I am plotting both of the functions here. now you can see the difference. mean square error मेरा curve है but mean absolute error जो है it is of V shape. so this is like the difference in mean square error and mean absolute error and why we don't consider the mean absolute error. so इससे आपको clear हो जाएगा ग्राफ देख के. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस. नाउ अब थोड़ी सी और टर्म्स आ रही हैं. और कितना टाइम लगेगा परम अभी, और बाकी कितना है? आई गेस हाफ एन आवर बिकॉज 50% इज completed. ओके. नाउ सी ओके, मैं आपसे बस एक चीज़ सो हेयर आप हमने जैसे लाइक हमने बोला था, डिस्कस करा था कि विच एवर हैज़ द लोएस्ट एरर दैट लाइन इज़ द बेस्ट फिट, राइट? एंड हम एरर कंप्यूट कर रहे थे लाइक ओके मैं स्टार्ट करता हूँ. जैसे मेरे पास ये फिट है, वी हैव दिस डेटा एंड ये मेरी लाइन है एंड वी हैव टू बेस्ट फिट इट.
एंड इसकी इक्वेशन जो है वो है डब्ल्यू एक्स प्लस बी, राइट। एंड टू कंप्यूट द एरर वी हैव मीन स्क्वायर्ड एरर, जिसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, ओके, जिसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, राइट, ऑन अ कर्व शेप। हम यहाँ से बेस्ट फिट से एरर पे आए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इन द एरर। लाइक हमें जो है हमें वो वैल्यू चाहिए डब्ल्यू की और बी की जिस पे सबसे कम एरर आए। सो कम एरर पे आप देख सकते हो लाइक ज़ीरो एरर है मेरा यहाँ पे फॉर द स्लोप वैल्यू डब्ल्यू, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मिनिमम देखा जाए इस फंक्शन का, जैसे ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा आप लोगों ने सुने होंगे, नॉट इवन दैट, फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आ रही है आपके हिसाब से? लाइक यू कैन पॉइंट इट आउट बाय नंबर्स और समथिंग। ओके, जितना आप देखोगे जितना मेरा वैल्यूज लाइक साइड एट पे जीरो बढ़ रही है, राइट, जितनी मैं वैल्यूज माइनस में लेके जा रहा हूँ स्लोप की, या जितनी ज़्यादा पॉजिटिव में लेके जा रहा हूँ, मेरी वैल्यूज बढ़ रही है। सो इट इज़ नॉट द मिनिमम, बट ज़ीरो पे मेरी सबसे कम है वाई एक्सिस पे वैल्यू, ओके। तो मुझे जो है मुझे ना यहाँ से लाइक लेट्स सपोज ये मैंने ना अपना कॉस्ट फंक्शन प्लॉट कर दिया, ठीक है। मान लो अभी मैं हूँ इस W पे, ठीक है, एंड इस W पे मेरा लॉस है वो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। और मुझे चाहिए सबसे मिनिमम लॉस, और सबसे मिनिमम लॉस है वो यहाँ पे है। तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ जाना है मुझे। अब ये मैं कैसे जाऊँगा? सो आई एम टेलिंग यू द ग्रेडियंट डिसेंट, ओके। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या है वो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। सो आपको जैसे लाइक ठीक है, इससे पहले आई शुड टेल यू दिस। सो या यू कैन इग्नोर दिस फंक्शंस एज ऑफ नाउ, बस अभी आप देखना, ओके। सो जैसे मान लो अभी मेरा W 0 है एंड मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर आपको दिख रहा है लाइक दिस टेक्स्ट, ये आपको टेक्स्ट विजिबल है एंड द वैल्यूज 4185 एंड ऑल, या विजिबल विजिबल। ओके। सो हेयर यू कैन सी अभी मेरा W जो है वो ग्रीन कलर पे सबसे नीचे है, तो मेरा मीन स्क्वायर एरर 4185 है। अभी अगर जैसे मैं W को माइनस पे करूँगा ना, तो आप देखोगे मेरा यहाँ पे चला गया W, लाइक वो कर्व नीचे जाने ज़ीरो की जगह थोड़ा सा ऊपर चला गया, एंड जो मेरा मीन स्क्वायर एरर है वो काफ़ी बढ़ गया। सेम फॉर द अगर मैं पॉजिटिव में भी लेके जाऊँगा, क्योंकि स्क्वायर्ड फंक्शन ही ऐसा होता है उसका, लाइक इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर्ड फंक्शन। सो यू कैन सी अभी भी मेरा लॉस जो है बढ़ गया काफ़ी। सो मेरा सबसे कम लॉस जो है वो मेरा है ज़ीरो पे, लाइक इफ आई डिफाइन इट एट हियर। सो मेरा ज़ीरो पे सबसे कम लॉस है, एंड ज़ीरो पे ना मेरा स्लोप भी जो है बिल्कुल ज़ीरो है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आई हैव सम स्लोप, ठीक है, लाइक ओके, टच नहीं कर रहा। सो ग्राफ का अगर मुझे लाइक कर्व का स्लोप निकालना है, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो मेरा स्लोप यहाँ पे है, राइट। एंड ग्राफ का जो स्लोप होता है कर्व का, वी कॉल इट एज अ टेंजेंट। सो दिस रेड लाइन इज द टेंजेंट of this curve at some point W. So is this clear? ये जो आपको सामने तीन चीज़ें दिख रही है, that scatter point W and the tangent and the mean square error. Is it clear to you all? Guys? Yeah. Okay. So now अभी जो है what we have to do, हमें जो है यहाँ से ना यहाँ पे जाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा W यहाँ पे, तो इफ़ आई कैलकुलेट द स्लोप, तो मेरा स्लोप यहाँ पे ना नेगेटिव पे आएगा, क्योंकि मैं जो है नीचे लाइक इफ़ आई कैलकुलेट द स्लोप है, तो मेरा यहाँ पे स्लोप नेगेटिव पे आएगा। एंड लाइक मेरा नेगेटिव में स्लोप है, सो व्हाट आई कैन इंटरप्रेट बाय दिस कि मुझे नीचे जाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जाना है, सो व्हाट आई डू इज़ लाइक मेरी W की वैल्यू यहाँ पे मान लो मेरी W की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी मेरी W की वैल्यू मान लो -100 है। सो -100 से मुझे 0 पे जाना है, एंड द सेम थिंग आई कैन अचीव इट लाइक वाया ग्रेडियंट डिसेंट। व्हाट इज़ ग्रेडियंट डिसेंट नाउ? मुझे ना हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप निकालना है, एंड वो स्लोप लाइक स्लोप निकालने के बाद जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो मैं W से माइनस कर दूंगा, ठीक है।
एंड इफ आई माइनस इट फ्रॉम हेयर, लेट सपोज अब जो मैंने माइनस कर दिया तो मेरा यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया W, सो मेरा न्यू W आ गया यहाँ पे विच इज -80, यू कैन से same thing I'll do again. I'll calculate the slope and I'll go downward and I'll get the W here, and the same thing I'll repeat until I go to the minimum value. So this is gradient descent. अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा लाइक क्या है. लेट सपोज यू आर ऑन अ ओके ओके, इतना क्लियर है थोड़ा आपको, लाइक आर यू गेटिंग द इंट्यूशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर? Okay, guys, is this clear or like should I explain? Okay, so देखो, we have to go from here, we have to go till there. Okay, so मुझे नीचे जाना है. So what I am doing here is I am applying gradient descent here. You mean to achieve the minimum error Right, by changing the right, gradient, means by lowering the difference, right? right. And हर जैसे आपने सिंगल वेरिएबल के लिए देखा होगा, लाइक फॉर द सिंगल वेरिएबल we have a slope, but if we have multiple variables then we call them as a gradient, right? ये आपको पता होगा from the multivariable calculus. सिंगल वेरिएबल के लिए we have the slope, but for multiple variables we have the gradient, जिसमें gradient में हर एक gradient is the array of the slopes, you can say, for each of the variable. Okay, so that's here from the name gradient comes. And descent is basically, चाहे मैं like if I even start from here, मुझे जाना नीचे ही है, so I have to descend it, so मुझे नीचे नीचे ही जाना है, so that's why it is known as gradient descent. Okay, so this is like the gradient descent. अभी this is the rough which we can say. अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ. I have this graph, you can see here. ये मेरा ना 0 पे अभी स्लोप जो है लाइक मीन स्क्वायर एरर का, या लेफ्ट साइड पे मेरा मीन स्क्वायर एरर है, राइट साइड पे उसी मीन स्क्वायर एरर ग्राफ का डेरिवेटिव मैंने प्लॉट करा हुआ है. सो इफ़ आई हैव W इन माइनस तो मेरा स्लोप भी नेगेटिव में होगा. अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्लोप नेगेटिव में है, लाइक स्लोप W विच इज़ अराउंड हेयर, विच इज़ -300 एंड -300. सो जितना जितना लाइक इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, या इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो मुझे ना यहाँ से नीचे जा जाके मुझे यहाँ पे जाना है बिल्कुल मिनिमम पे. सो व्हाट आई डू इज़ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ W. ठीक है, मैं यहाँ से W जैसे जैसे इंक्रीज करता रहूँगा, मेरा स्लोप भी जो है 0 होता जाएगा. सो जहाँ मेरा स्लोप 0 हो गया, आई अचीव द मिनिमम. सो देर आर इक्वेशंस ऑल्सो टू अचीव द मिनिमम, एंड वो वे जो है वो नॉर्मल इक्वेशन का वे होता है. एंड देन वी हैव द ग्रेडियंट डिसेंट ऑल्सो विच इज़ अनदर वे. ओके, एंड इफ आई हैव द W इन पॉजिटिव, तब भी आप देखोगे तब आई हैव द स्लोप इन लाइक पॉजिटिव, तब मेरा स्लोप जो है पॉजिटिव है, विच इज़ 1141, यू कैन सी हेयर फॉर द W वैल्यू 620. ठीक है, तो मुझे जो है स्लोप जो है बिल्कुल मुझे 0 करना है, क्योंकि 0 पे आई रीच द मिनिमम, क्योंकि ये वो है मीन स्क्वायर एरर है, इट इज़ अ स्क्वायर्ड फंक्शन. And this is how like I can do the all the tweaks and I can achieve the minimum. So मुझे जो है ऊपर से नीचे आना है बेसिकली, कैसे भी, चाहे लेफ्ट पे हूँ मैं या राइट पे हूँ. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट. इतना आप लोगों को क्लियर है? Right. Actually, जो x square जो अगर if you take it as an x square, then derivative is 2x. It's a straight line with positive slope. And yes, at 0 we are getting minimum error. right, Right. राइट, यू आर राइट. वही है हमारा सेम एक्स स्क्वायर वाला ही. 2x इज द स्लोप ऑफ द एक्स स्क्वायर इक्वेशन, एंड whenever we have the 2x as 0 we achieve the minimum, right? So this is like what we have to do in the gradient descent and all the stuff. And okay, I had the animation, but okay, what will I do? Let me open this up. Okay, so let me run this cells here.
Okay, file not found error. Oh, yeah. Now you can see I am having the same notebook, but I am running it in my local because Kaggle पे जो है वो animation work नहीं करती mainly. So let's hope animation work कर जाए. Yeah, okay, so this is the animation, animated graph. Will it work? Okay, I think मुझे W की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी. Let me set W to a smaller value. I have now set it like the range for W from -100 to 100. So हमें जो है like 0 पे जाना है. So okay, it's not working. Yeah, कुछ तो issue है. It is not working. Oh, okay. Not binding dot show. PLT dot show is this. More than 20 features are open. Okay. Okay, ignore that animation अभी work नहीं कर रही. Yeah, so the main thing is like हमें जो है like whatever W we have to go to the minimum. Okay, so like हमें बिल्कुल यहाँ पे जाना. So this is like our main thing which is gradient descent. So in gradient descent थोड़ा सा और आगे जाता हूँ. Like in gradient descent जैसे हमारा यहाँ पे ये है, if I plot it again like this. Now अगर मेरा like मेरा W minimum पे यहाँ पे है, let's suppose मेरा W 0 पे I'll get the minimum loss. Okay, J, and अभी मान लो मेरा W यहाँ पे है. ठीक है, तो मुझे W की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करनी. लाइक मेरा W भी माइनस में है, राइट, और मुझे 0 पे जाना है. सो इफ़ आई ऐड सम पॉजिटिव वैल्यू in my W, then only I can like get to the 0, right? Am I right? अगर मैं माइनस में पॉजिटिव ऐड करूँगा then only I'll reach closer to 0. and same thing if I have W in positive, तो मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूंगा. Like I'll minus something so that I can get a lower value which is closer to 0. So the same thing like we have to achieve. So मेरे जो है W वो कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग में, एंड लाइक द स्लोप मेरा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, एंड मुझे जो है बेस्ट स्लोप चाहिए. ठीक है, बेस्ट फिट लाइन के लिए मुझे बेस्ट स्लोप चाहिए. सो उसके लिए वी अप्लाई द ग्रेडियंट डिसेंट. अब ग्रेडियंट डिसेंट में व्हाट वी डू, वी टेक द स्लोप जैसे मैंने आपको बोला, एंड स्लोप में से हम कुछ माइनस करते हैं. सो व्हाट वी हैव इज लाइक जो मेरी अभी की W वैल्यू है उसमें से मैं माइनस करूँगा डेरिवेटिव. सो इट इज़ अ पार्शियल डेरिवेटिव बिकॉज वी हैव a lot of features. So partial derivative we write like this. So जो मेरा cost है, cost को I write it as a j. Okay, we call it as a j, function of j. So जो मैंने sigma I equals to 1 y minus y hat square divided by m करा था ना. So this is my cost function j. We can call it as a j. and मुझे cost function j का derivative निकालना है with respect to W, and वो derivative मुझे W से माइनस कर देना. So what I'll get a new value is that new value will be closer to the minimum. Okay, and मुझे same steps मुझे काफ़ी बारी करने हैं, एक बारी में नहीं हो जाएगा. and इसमें like we get a concept of learning rate. like आप लोगों ने learning rate बहुत अप्लाई किया होगा, डिफरेंट लर्निंग रेट आपने सुना होगा. सो व्हाट लर्निंग रेट डू इज कि हमें कितने बड़े स्टेप्स लेने हैं कितने छोटे स्टेप्स लेने हैं, लर्निंग रेट डिफाइंस दैट. सो इफ़ आई प्लॉट इट हियर, सो मान लो अभी मेरा ओके टेंजेंट मेरा यहाँ पे ऐसे बन रहा है. ओके, एंड इफ़ आई हैव लेट सपोज मैंने मेरा लर्निंग रेट मैं अल्फ़ा से डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है,
तो लेट्स सपोज इफ मेरा लर्निंग रेट इज़ 2, तो मेरा जितना स्लोप है ना, आई विल मल्टीप्लाई इट विद द 2 एंड देन मेरा स्टेप थोड़ा बड़ा होगा. एंड इफ़ आई डू द सेम थिंग अगेन, तो मेरा स्टेप यहाँ बड़ा होगा. एंड अगर मैं बार बार ऐसे करूँगा ना फॉर सम नंबर ऑफ आइट्रेशंस, तो मेरा जो है वापस से लाइक आगे जा सकता है, विच आई डोंट वांट. सो इसलिए जो है लर्निंग रेट हमें सेट करना पड़ता है टू सम गुड वैल्यू. सो वी हैव लाइक this is the parameter which we have to tune, which we can tune via hyperparameter tuning. Okay, so this is where learning rate comes in. तो अगर मेरा learning rate कम होगा ना, तो मेरे जो steps हैं that will be smaller. तो अगर smaller steps होंगे, so it will take a lot of time to reach the minimum. अगर मेरे learning rate बहुत बड़ा है, so it will take very big steps and it may cross the minimum value. So like that's why we have to tune the learning rate accordingly, and we don't have like any specific number of how many steps should we take. एंड वो स्टेप्स जो है वो आर्बिटरी है, वो हमें रन करके चेक करना पड़ता है. एंड दैट स्टेप्स आर कॉल्ड एज आइट्रेशंस और epochs which you have seen in the code. Okay, like आपने सुना होगा कि convergence and all. So convergence is like let's suppose हमारा learning rate है 0.01. तो मैंने W यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे जाना यहाँ पे है. देन मैं छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ. सो एक टाइम पे क्या हुआ, मेरा स्लोप भी कम हो गया एंड मेरे स्टेप्स ना बहुत छोटे छोटे से हो गए. सो इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोजर टू द मिनिमम बट इट इज़ नॉट रीचिंग द मिनिमम. सो तब जो है मेरा लॉस का डिफरेंस बहुत कम है. सो इन दिस लाइक अगर मेरा इतने से एरिया में है ना, लाइक इन सम सर्टेन रेंज, आई कैन कॉल लाइक माई मॉडल इज़ कन्वर्ज्ड. ओके, सो आपने सुना होगा कन्वर्जेंस वार्निंग, आपने देखी होगी लाइक इन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड linear regression, we get a warning which is convergence warning, right? Yeah, convergence means we get the like best value. Not the best value, we are closer to best value. ठीक है, हम convergence से हम ये नहीं कह सकते we get the best value. So okay, मैं आपको थोड़े से ना samples दिखा देता हूँ. Let's suppose this and this and this. So I am plotting the same loss function here, like this. Assume these are same. Okay, I have different learning rates. So if I have learning rate as 2, like here alpha is 2, here alpha as let's say 0.1, here alpha as 0.001. okay, and I have the minimum here. और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेट्स सपोज यहाँ से. ठीक है, तो 2 से क्या होगा, मैं बड़े बड़े स्टेप्स लूँगा. सो बड़े बड़े स्टेप्स पे क्या होता है, कभी कभी ना वी ओवरशूट द मिनिमम. सो ओवरशूट द मिनिमम मीन्स हम मिनिमम को स्किप कर देते हैं एंड वी रीच अगेन एंड अगेन. एंड अगर मेरा अल्फा लाइक बहुत बड़ा, लेट्स सपोज मैंने 10 ले लिया, सो वी मे गेट समथिंग लाइक, ओके मैं उसका आगे दिखाऊंगा आपको. लेट्स सपोज ओके अगर मेरा 2 है तो मेरे स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे. सो वी मे स्किप और ओवरशूट द मिनिमम वैल्यू which we don't want. okay, and अगर मेरा learning rate और भी बड़ा है, let's suppose alpha is 10, तो मेरे जो steps हैं, right, so ये जो है ये बहुत skip कर जाएगा and it may like go like this and this. so आपने like in the live session of instructor live session कोई एक कह रहा था ना उसका training loss बढ़ रहा है, right, instead of decreasing. So the training loss तभी बढ़ता है if you have a learning rate like if you have very higher value as a learning rate. okay, so that's why we keep learning rate as a small. so let's suppose मैंने 0.1 रखा है, so it is taking like barely good steps and it is almost closer to this. so ये यहाँ पे है, not exactly this, so we can call it as our model is converged. ठीक है, now if we have 0.01 एंड लेट्स सपोज मैं स्टेप्स ना सब में मैक्सिमम 50 ही ले रहा हूँ. ठीक है, मैंने स्टेप्स 50 डिफाइन कर दिए. अब मेरा लर्निंग रेट बहुत छोटा है, तो मेरे यहाँ पे इतने छोटे 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 स्टेप्स होंगे कि मैं इसके पास जाते जाते पहुँच ही नहीं पाऊंगा इसके पास. लेट्स सपोज 50 पे आके ना मैं यहाँ रुक गया, यहाँ पे मेरा 50th स्टेप कंप्लीट हो गया. सो आई गेट द W वैल्यू हेयर, बट मेरा यहाँ पे है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आइदर आई हैव टू प्लॉट द लॉस फंक्शन एंड ऑल,
इफ़ आई इंक्रीज इट टू 100 नंबर ऑफ इपॉक्स देन मैं इसके पास जा सकता हूँ, बट तब भी अगर मेरा लर्निंग रेट बहुत छोटा है ना, तो तब भी उसके पास जाएगा, बट बहुत रेयर चांस है कि इट विल एग्जैक्टली गो टू द मिनिमम. देन ऑल्सो वी कॉल आवर मॉडल एज लाइक इट इज़ कन्वर्ज्ड. तो लर्निंग रेट हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं रख सकते, ज़्यादा छोटा भी नहीं रख सकते. सो वी नीड टू डिफाइन अ स्मॉल लाइक a good value of learning rate, and there is where hyper parameter tuning comes in. Okay, उस पे मैं next session पे like we will do it, hyper parameter tuning. So this all Pram, is yeah. this all is clear to you all? माय क्वेश्चन यार कि Yes. अगर हम कन्वर्ज जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ से पहले ही हम रुक जाते हैं, हमारे 50 स्टेप है, तो इसको क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? द See, थर्ड वन. we call it as early stopping. ठीक है. ओके. हम पहले ही रुक गए, so there is a early stopping parameter also. कुछ या कुछ और में हमारे है, यहाँ या कुछ कुछ में नहीं है. एंड अर्ली स्टॉपिंग को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा जो स्लोप है ना वो बहुत लाइक स्लोप की, जैसे मान लो हमने एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि मेरा स्लोप 0.5 से कम नहीं आना चाहिए. अगर मेरा स्लोप 0.4 आ गया ना किसी वैल्यू पे, सो आई विल स्टॉप देयर ओनली. ठीक है. एंड आई कैन कॉल माई मॉडल इज ऑलरेडी कन्वर्ज्ड. ओके. और यहाँ एक हमारे यहाँ तो कन्वर्ज होने के लिए तो मॉडल में या हम जो भी कोड लिखते हैं वहाँ डिफाइन होगा वो कन्वर्ज होता ही होगा, या ऐसा भी होता है कभी नहीं होता? सी बहुत टाइम्स मोस्टली. कन्वर्ज नहीं होता, दैट्स वेयर लाइक ऑल दीज टेक्निक्स कम इन. ठीक है. मैं ओके ओके. आपको और हम 1000 कुछ ऐसा भी तो डिफाइन कर देते हैं, मैंने कहीं पढ़ा या सुना कि उससे फिर हो ही जाता है वो, मतलब हम पहुंच ही जाते ओके, हैं दैट कुछ इज नंबर डिफाइन ऑफ करते देते आइटरेशंस. जो हैं. इपॉक्स या मैंने बोला ना, 50, 100, 1000, हम वैसे कुछ वैसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. बट देन ऑल्सो अगर मेरी आइटरेशंस पे ज़्यादा लॉस में डिफरेंस नहीं आ रहा, देन वी कैन से आवर मॉडल इज कन्वर्ट्स, क्योंकि हम फालतू के स्टेप्स रन कर रहे हैं. देन ओके, लेट्स चेक. ओके, सो ये जो चीज़ है ना, ये अभी हमने की 2D में, राइट. now we have various features like n equals 10 we can have, n equals 20 we can have, and जैसा अभी हमने पाइपलाइन के टाइम देखा, we have n equals 87, right. so हम 87 डायमेंशंस का तो कोई ग्राफ बना नहीं सकते, राइट. बट वी कैन इमेजिन लाइक वी कैन प्लॉट 3D ग्राफ एज ऑफ नाउ, जितना मुझे पता है. मे बी 4D कोई कर पाए या नहीं, आई डोंट नो, बट 3D वी कैन इजीली प्लॉट. so this is the 3D plot I have created for the cost function. okay. If I like show you, I have created a Python script of it. So it is running. Yeah, here. This is the 3D plot of the cost function here. You can see जो मेरा ग्लोबल मिनिमम है वो मेरा यहाँ पे है. कैन आई zoom it? No. So आप लाइक देख सकते हो, जो मेरा ये मेरा W2 है वेट, और यहाँ पे मेरा W1 है वेट. लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे वी हैव W2. यू कैन सी दैट red dot is the global minimum I have, like the minimum value we have. okay. And that is my complete cost function I have plotted for two features. okay, like feature 1 and feature 2. so this is how my cost function looks in 3D. ठीक है. अब more dimensions में we can't see, so इसलिए like in 3D only I have shown, I am showing you. I hope आपको ये visualization से थोड़ा और क्लियर हो रहा होगा. अब मैं इस पे लाइक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लाइक 3D में भी कि कैसे हम नीचे जाते हैं. लाइक इन 2D वी हैव स्लोप्स, एंड जैसे मैंने बोला इन 3D वी हैव ग्रेडियंट्स. ठीक है. ओके, करेक्ट स्लोप्स नॉट डिफाइंड. ओके ओके ओके. मेरा यहाँ से कुछ कोड मिसिंग है. Yes. Is there or um, correct slope is not defined. I have done it. Okay, let me run it from here. X subset 2 is not defined. Okay, sorry. Yeah, let me run this once. Then I have this. Then I'm running this. Then I'm running this.
सो दिस इज द 2D सेम 3D प्लॉट, ओके। एंड यहाँ पे बेस्ट वैल्यू भी मैंने लिखी हुई है जो W1 और W2 की है। आई एम टेकिंग 2 फीचर्स नाउ इंस्टेड ऑफ 1। 1 फीचर में मेरा ऐसा था, ठीक है, 2D प्लॉट, एंड देन आई हैव 3D प्लॉट हेयर विच इज दिस, ओके। सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। यू कैन सी द बेस्ट W1 एंड W2 वैल्यू। सो नाउ एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था विच इज़ दिस। सेम ग्राफ है, देर इज़ नॉट मच डिफरेंस, जस्ट दैट मैंने कलर थोड़ा सा चेंज करा हुआ है इसका, ओके। हियर वी हैव 2 स्कैटर पॉइंट्स, like a, okay, let me show you it in the, yeah, here. So it's subset 2 there, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से दिख जाएगा, yeah. So here let me increase it also, okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस कॉस्ट फंक्शन, एंड यहाँ पे ना जो बेस्ट वैल्यू है वी हैव दिस रेड वन, like this red dot we have the best, and green also मैंने जो current W1 W2 define करा हुआ है। Similarly जो मेरे यहाँ पे थे like which was this same thing I have defined here, okay। अब मैं W1 और W2 के साथ थोड़ा सा like I can play, like if I set W1 to minus, तो आप देखोगे जो मेरा ग्रीन है वो मेरा ऊपर हो गया, राइट। आई कैन नॉट जूम इट मच, या अभी थोड़ा आपको दिख रहा होगा, लाइक दिस ग्रीन इज अप। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो यू कैन सी, राइट, ग्रीन मेरा अभी यहाँ पे, बिकॉज आई हैव सेट माई W1 टू -240, सो मेरा W1 यहाँ पे है, एंड दिस इज़ द रेड विच इज़ द ग्लोबल मिनिमम। सो मुझे ना यहाँ इस वैल्यू से यहाँ से नीचे से यहाँ से ऐसे करके बिल्कुल नीचे आना है। सो दिस इज़ द ग्रेडियंट डिसेंट कंसेप्ट। This is a 3D plot which I had created to like just to show you all how it works, okay। So आपको थोड़ा सा परम जी, विजुअलाइजेशन से क्लियर हो रहा एक होगा। मेरा डाउट था इसमें, जो हम WX+B हम जो ले रहा था ना, हाँ हाँ, इसमें W1 एंड W2 आया, मतलब 2 डायमेंशनली हमने लिया, मतलब राइट। उसी का ही मैं आपको आगे बताने वाला था, आई स्किप्ड इट, सॉरी। सी मेरा x जो है, x इज ऑफ शेप m, राइट। M is the number of rows and n is the number of features, am I right? Like जो या हमने x और m और n का करा था। सो लेट सपोज मेरा n जो है 3 है, सो हर एक फीचर के लिए ना आई हैव टू डिफाइन अ w। सो W1 which is for n1 and for n2 for sorry for n3 I have to define separate w values, ठीक है। अब यहाँ पे WX+B जो कर रहे हैं ना, this is the matrix multiplication, mainly, like not the matrix Right, multiplication, actually for each feature there will be different W. राइट। सो देखो मैं आपको ना थोड़ा सा एक दिखाता हूँ, जैसे मान लो मेरे x की जो शेप है विच इज़ लेट सपोज 5,3, सो मेरा x मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 and so on and so forth till 5th row, ठीक है। मेरा मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा विच इज़ ऑफ शेप 5,3, राइट। एंड जो मेरा W है ना, इट विल बी ऑफ शेप 3,1। यहाँ पे मेरा W1 होगा, यहाँ पे मेरा W2 होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा W3 होगा, एंड वी आर डूइंग द डॉट प्रोडक्ट हेयर। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट सिंगल पे, लाइक इफ वी हैव अ सिंगल स्केलर, then also like what we are doing is we have a vector like this, ठीक है, जहाँ पे मेरी ये वैल्यू होगी, like this is for a single variable and this is for a multi variable, so it's like this। ये मेरा जो x है वो ऐसा कुछ होगा, एंड इस पे मेरा W एक ही होगा क्योंकि आई हैव ओनली वन फीचर, ठीक है। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट स्केलर, लाइक आई एम मल्टीप्लाइंग अ स्केलर विद द कंप्लीट एरे, हेयर आई एम मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्योंकि 5 सैम्पल्स हैं, 3 फीचर्स हैं, एंड दिस इज दिस, सो we'll get a scale, sorry we'll get a scalar at the end, okay, not a scalar, sorry। हमें जो है एक न्यू मिलेगा वेक्टर विच इज़ ऑफ लाइक 5,1, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होगी, राइट।
एंड जिसमें मेरे हर एक सैम्पल के लिए डब्ल्यू एक्स की वैल्यू होगी, लाइक डब्ल्यू इंटू एक्स. सो दिस इज फॉर द मल्टी वेरिएबल. इज दिस क्लियर बालावीरू? या ओके. बाकी सबको क्लियर है ये अभी तक जितना भी हमने करा? आई नो काफ़ी ज़्यादा हो गया है. ओके, डोंट वरी. Okay, should I write the linear regression from scratch or should I just show you? I have already written it. आप लोग जैसे बोलो. नहीं, थोड़ा स्क्रैच से रहता है तो थोड़ा ज्यादा समझ आता है. अब ऊपर Okay, ऊपर से करते हैं okay, तो no थोड़ा worries, no मुश्किल worries. उसको ओवरकम करने में थोड़ा Yeah, मुश्किल हो sure. जाता Let me write it then. So, linear regression. Let me write the heading here. I'll share all these 2-3 notebooks with you all guys. Okay. So in linear regression हमारे पास सबसे पहले equation होती है this equation which is f of x w c dot x plus b. ये हमारी इक्वेशन होती है, है. राइट? जी हाँ, अभी अभी कहीं लिखा हुआ है तो वहीं दिखा दो क्योंकि टाइम काफी हो गया. फिर अभी नेक्स्ट कर लेंगे कभी. अगर हाँ, कहीं पे राइटिंग है तो आप ऑफ वहीं से कोर्स आई कंटिन्यू कर हैव. सकते हैं. लेट मी. टाइम काफी हो गया है ना. linear regression. आई नो बहुत टाइम हो गया बट इट जस्ट देखो, इट इज़ द बेस ऑफ योर कंप्लीट वीक 4 एंड इसके बाद या आपको बस फंक्शन कॉल करने हैं इफ़ यू नो द कंसेप्ट. बिल्कुल. या सो हेयर आई हैव द सेम कोड. मेरे पास अभी 10 फीचर्स हैं इंस्टेड ऑफ 5 फीचर. ओके, लेट मी स्टार्ट विद द 1 फीचर ओनली. ठीक है, मेरे पास m इक्वल्स 1000 है एंड n इक्वल्स 1 है. तो मेरे पास एक फीचर है. ठीक है. सो आई हैव दिस डेटा हियर यू कैन सी. मेरे पास ये फर्स्ट 5 सैम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये मेरा टारगेट है एंड मैंने जो है इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में स्प्लिट कर लिया. ठीक है, एक्स ट्रेन और एक्स वैलिड में. और ये मेरे लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है. ये सबको दिख रहा है ना? इज इट हाँ. क्लियर? ओके ओके. ओके. So या this is my linear regression equation and then this is my cost function which is mean square error. ठीक है. This all I have written it in the raw format and here I am defining some random weights. So मैं जो है like आपको जैसे मैंने आपको बोला मेरा W कहीं से भी start हो सकता है. Like if this is the cost function तो मेरा W यहाँ से भी start हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है. We need to find the best W value. तो मैं W किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकता हूँ. सो मैं अभी जो है जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है. सो जितने मेरे फीचर्स होंगे उतने मेरी W की वैल्यू होंगी. लाइक हियर आई हैव n इक्वल्स 1. सो या नाउ लेट मी रन इट. सो मेरा W भी जो है एक है एंड B भी मेरा एक ही है एरे. ठीक है, वन एलिमेंट का ही एरे है. इट इज़ एन एरे बट इट इज़ ऑफ वन एलिमेंट. नाउ अभी अगर मैं इस W और B पे मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ द मीन स्क्वायर एरर, इफ आई रन इट सो आई गेट द कॉस्ट इज 274.19 समथिंग. ठीक है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ कंप्यूट ग्रेडियंट. दिस इज बेसिकली कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, एंड इफ आई रन इट नाउ दिस इज द कंप्लीट ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन. इसमें मैं कॉस्ट और ग्रेडियंट फंक्शन सब मिला रहा हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग इज okay, let me simply first let me not set the condition here as of now. Yeah, so now let's see how gradient descent is working. So अगर मैंने iterations जो है if I set the iterations to 10 तो मेरा ये जो W है ना मेरा 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे मेरी कॉस्ट आती जाएगी. इफ़ आई रन इट यू कैन सी आइट्रेशन 0 विच इज़ द फर्स्ट आइट्रेशन. मेरी कॉस्ट थी इतनी. आइट्रेशन 1 ओके, यहाँ पे मैं ना i+1 कर देता हूँ, डैट विल बी मोर बेटर. या फर्स्ट आइट्रेशन में मेरी कॉस्ट थी 268. सेकेंड आइट्रेशन में मेरी कॉस्ट है 263. थर्ड में 258. देखो धीरे धीरे कम हो रही है, राइट? एट द 10th आइट्रेशन आई हैव द कॉस्ट 225 एंड मैंने क्योंकि 10 आइट्रेशन से डिफाइन करी थी एंड अल्फा इज माई लर्निंग रेट. ठीक है, दिस इज माई लर्निंग रेट. अगर मैं लर्निंग रेट बढ़ा देता हूँ, लेट्स से मैं 0.1 कर देता हूँ, सो यू कैन सी मैं कितने जल्दी मेरा कॉस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है. एंड इफ आई सेट लर्निंग रेट टू 1 तो यू कैन सी मॉडल मेरा कन्वर्ज हो गया. कन्वर्ज इन द सेंस मेरी कॉस्ट सेम आ रही है फ्रॉम द आइट्रेशन 2, राइट? यू कैन सी there is no meaning of last 8 value. राइट. सो हम जो है फर्स्ट 2 आइट्रेशंस में ही रुक सकते हैं.
and if I set alpha to let's suppose 2, you can see मेरी cost increase हो रही है. स्टार्ट हुई 250 से एंड 10th आइट्रेशन पे होगी 312, जो मैंने आपको बोला था ओवर शूट कर जाएगा, राइट? Reverse direction. Yeah, if I set alpha to 5, you can see the cost 4,000 say it is in now millions, I guess, maybe more than millions. So you can see that's why we have to set alpha to some smaller value. So मैं अभी 0.1 लेके चल रहा हूँ and iterations मेरी 10 है. If I set iteration to 100 and let me put it this condition, so हर 10 iterations पे I'll get the cost. Okay, let me now remove this. Now you can see मेरी first iteration पे तो मेरी 220 वो थी 223, then the after 10 iterations I have this cost 28, then after 20 iterations I have this cost 3.68, then 0.49 and 0.07, then 0.11. आप देख रहे हो लाइक आफ्टर 50 iterations मेरा करना वेस्ट है क्योंकि मेरा लॉस सेम आ रहा है, राइट? So here we can say our model is converged at 50th iteration. So this is how gradient descent works. Is this clear guys? आपको like देख के सही लग like is it understandable? Okay. मैं आपको फिर और थोड़ा सा एक ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ. Yeah. So here you can see this is I am plotting. On y-axis I have the cost and on the x-axis I have the w values. ठीक है? So here you can see जैसे जैसे मेरी w की वैल्यूज बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है? And if I like have let's suppose 1000 iterations, or in fact in the 100 iterations only, if I set alpha to 2 and if I run it now and let me plot this graph, so you can see this is how it is oscillating. So जो अंकित आपने बोला था, सॉरी अमित आपने जो बोला था, this is oscillating like this. अगर मैं इसको 1 भी करता हूँ तो तब भी जो है it will oscillate like this, which you can see here. I should use 20 iteration, that will be better. Just a second. Okay, it is same as earlier. Okay, 10 iterations. Okay, I have done with the 10 iterations and now let me plot it. Okay, now also I am getting the same isolated graph. I may have like शायद मेरे W and B में भी कुछ I guess issue हो सकता है. Okay, yeah. Now I should run. Yes, so okay, this is overshooting, so that's why we have to set alpha to some smaller value. So now if I plot it, okay, मेरा W is okay, there is some error, I think. Let me plot the W again. Okay, कुछ I think code में bug है. Yeah, leave it, but आपको like you get the intention, right? Intuition, complete intuition. कि कैसे gradient descent work करता है and कैसे linear regression work करता है. Is this clear to you all? I know काफ़ी लंबा चला गया आज session in terms of 3 hours. Yeah, कोई नहीं. But we covered 2 things, the chapter right. 3 and 4. Yeah, we have completed week 3 today in detail, and week 4 also, like concept wise I can say 100% and coding wise I can say only 50%. ठीक है? Rest the coding part we will do on the Wednesday session. So अभी सबको clear है आज जो हमने किया? Yes. Yeah. Okay, so I'll share all these 3 notebooks. First the pipeline one, then this also I'll share the linear regression one also. Okay, I'll share all these notebooks with you all, okay, in the video's description, so you can download it and try it on your own. So जो cost वाली जो है, here make sure you run some cells extra, like
you have to run this commented code also in the local, जिससे you will be able to like interact with the graph. Okay, so that's it about the session. I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा and you have learned something new, maybe something in better way. बिल्कुल। परम मेरा एक दो क्वेश्चन है या yes ask us. पूछ सकते हैं? ओके, अभी जो पाइपलाइन वाला किया था एक बार वो ओपन कर सकते हैं या वैसे ही पूछ सकता हूँ मैं? कोई सुनिए या हमने पाइपलाइन पहले ये तो समझ आ गया यहाँ पे सब हमने ब्रेक किया ऑर्डिनल के लिए किया या फिर हम कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, फिर उन सबको मर्ज कर दिया, ठीक है। मेरा पहले भी एक क्वेश्चन था जहाँ मैं कन्फ्यूजन तो नहीं कह सकते, क्लियर करना चाह रहा हूँ। हमने कोई भी हम टैग नहीं लगाना चाह रहे हैं, मतलब हम फिल इन द ब्लैंक्स भरना चाह रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम मीन भी भर सकते हैं, मीडियन भी, या कांस्टेंट वैल्यू भी डाल सकते हैं, वो हमें पे। तो मैंने ऐसे 3 चीज़ें अलग अलग ट्राई करने की मैं सोच रहा हूँ, तो वन टाइम पे मैं एक ही करूँ या तीनों करके, फिर ऐसा भी प्रोसीजर है कुछ, दो तीनों ही कर दूँ और लास्ट में जिससे भी बेस्ट रिजल्ट आए उसको ले लूँ? और ये खाली मैंने तो एक एग्जांपल बताया, 1 मिनट, मिसिंग वैल्यू के लिए। ऐसे ही हमारे अब मॉडल चूज करेंगे सेम, वहाँ भी वही आएगा कि हमारे पास 4-5 मॉडल है, अब कौन से वाला कर, ऐसे ही मल्टीपल, ऐसे ही हम शायद फीचर ड्रॉप करने हैं हमें, तब भी वही आएगा कि कौन सा फीचर रखना है, कौन सा फीचर ड्रॉप करना है। तो ऐसे मतलब हर स्टेज पे वही मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास है। तो क्या हम इसका ही जानना चाह रहा हूँ। सी देखो, फर्स्ट तो स्टार्ट विद ओनली वन पाइपलाइन, ठीक है? एक पाइपलाइन से स्टार्ट वन करो। पाइपलाइन लेना है और उसमें एक एक चीज ही रखनी है। जैसे आप मुझे मिसिंग वैल्यू के लिए लेना है तो मीडियन ही रखूँ उसमें। हाँ, मीन मीडियन या कुछ भी एक ही चीज रखो। स्टार्ट विद एक ही ओनली रखनी वन है। पाइपलाइन, ठीक है? एंड डू द प्रेडिक्शंस, एंड उन प्रेडिक्शंस को आप सेव कर लो या कुछ भी, वो आपके ऊपर है, या डू द सबमिशन। देन क्रिएट 2-3 पाइपलाइंस, ठीक है? लाइक मीन, मीडियन और फिर मैं मोड के वापस लिए। आऊँ या फिर नो मैं नो नो, वापस आऊँ फिर से स्टार्ट वही करूँ? हाँ, सी 3 पाइपलाइंस बनाओ, तीनों पाइपलाइंस पे डू द प्रेडिक्शन एंड प्लॉट अ ग्राफ। बार चार्ट प्लॉट कर लो कि पाइपलाइन 1 पे मेरा जो है एक्यूरेसी वैलिडेशन सेट पे इतनी आ रही है, पाइपलाइन 2 पे मेरी एक्यूरेसी इतनी आ रही है, पाइपलाइन 3 पे एक्यूरेसी इतनी आ रही है, ठीक है? एंड विच एवर हैज़ द हाइएस्ट एक्यूरेसी यूज दैट, ठीक है? आप मैनुअली तो ऑफ कोर्स आप नंबर्स देख के कर लोगे, बट व्हेन यू हैव टू शो इन वाइवा ना मल्टीपल पाइपलाइंस का आपने कैसे लाइक यू हैव इवेल्युएटेड विच वन इज बेटर, सो इट्स बेटर आप पहले से एक ग्राफ भी बना लो साथ में, सो जिससे जो है आप एग्जामिनर को आप दिखा पाओगे कि दिस इज हाउ यू हैव इवेल्युएटेड विच पाइपलाइन इज बेटर। एंड सेम थिंग आप बाकी सबके लिए भी कर सकते हो, like ordinal encoding, one hot encoding, variance threshold, mutual information, RC, RVCE, and like all these feature selection, pre-processing stuff, models, ठीक है? बहुत सारी आपकी pipelines बन सकती है। Like you can create जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर बनाया, ठीक है? कॉलम ट्रांसफॉर्मर, एंड एक फाइनल मॉडल पाइपलाइन बनाई, तो एक फाइनल मॉडल पाइपलाइन बना लो एंड उसके अंदर लाइक ओके मेक सेवरल पाइपलाइंस विद सेवरल ट्रांसफॉर्मर्स ऑन द सेम मॉडल। जैसे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन चूज कर लिया एंड यू हैव मेड 5 डिफरेंट पाइपलाइंस, सो do 5 different predictions, check the validation score, accuracy, plot it, whichever is giving you the best accuracy. Not always I would say the best, also like there are some concepts like overfitting, so whichever you think कि अगर accuracy let's suppose आपने 5 पाइपलाइन बनाई एंड एक पे आपकी accuracy आ रही है 95 एंड एक पे आ रही है 99, so it's better you would choose 95 one. Why? Your model may overfit to the 99 like the pipeline one. Okay, right. so choose like अगर आपकी एक्यूरेसी आपको लग रहा है कि ठीक है 95 के आसपास आ सकती है तो चूज दिस। अगर आपको लग रहा है 99 एक्यूरेसी आ रही है, सो आप अगर टेस्ट सबमिशन करोगे ना, सो यू मे गेट वेरी लेस एक्यूरेसी इन द टेस्ट डेटा। ओके, तो दिस इज हाउ यू शुड डू। मैं आगे जो है फर्दर सेशंस में I'll show you one example of like using multiple pipelines, evaluating on multiple pipelines and selecting the best one, ठीक है? ओके। तो उसमें मल्टीपल जो पाइपलाइन आप बनाओगे उसमें सभी चीजें
मल्टीपल होंगे, मतलब right. आप मॉडल भी मल्टीपल और हाँ, कोई भी हमें प्री प्रोसेसर्स भी म, होंगे, मॉडल्स भी होंगे, क्रॉस वैलिडेशंस भी होंगी, ठीक है, वो मल्टीपल होंगे ना। राइट, बहुत कुछ होगा. सो बेसिक्स आपको फाउंडेशंस, इफ यू आर क्लियर विद लाइक फिट ट्रांसफॉर्म and in machine learning models like what is cost function, what is the equation, what is gradient descent, आपको अगर ये क्लियर है ना, आपको आगे कोड में बहुत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एंड यू विल गेट द आइडिया ऑल्सो, ठीक है. सो ओके इसलिए it is best to create pipelines if you like, if you are clear with the foundation. तो इसलिए बहुत लोग वीक 4 में, वीक 3 में स्टक हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें, बिकॉज दे डोंट नो द बेसिक्स. So that's why I have like taken a whole session on the basics only, क्योंकि मुझे कुछ टाइम लगा था बेसिक्स क्लियर करने में. बिल्कुल। और ये अभी इसमें एक दो टर्म आई है, हमें जो वैलिडेशन लेना होता है, वैलिडेशन तो हमारा यही है, जो हमारा ट्रेनिंग हमने, जो हमारे पास पूरा डेटा है उसमें से हमने टेस्ट ट्रेनिंग दो कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग में से ही फिर से हमें वैलिडेशन निकालना है ना. राइट, मेरा मतलब है मैंने राइट, पूरा डेटा है उसमें कुछ, से 80% हमने ट्रेनिंग के हाँ, लिए हाँ, लिया, 20% टेस्ट के लिए रख दिया, फिर जो हमारे पास ट्रेनिंग 80 उसमें से फिर से वैलिडेशन निकाला, उसे रख दिया, फिर हम ट्रेनिंग पे काम करेंगे और वैलिडेशन पे टेस्ट करेंगे, यही है ना. नो नो नो, नॉट लाइक दैट. आपको एक वैलिडेशन सेपरेट रखना है एंड उसी पे ही आपको सारा वर्क करना है. अगर आप क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हो, देन यू डोंट नीड टू क्रिएट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. आप डायरेक्टली पूरे ट्रेनिंग डेटा पे कर सकते हो, क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन कुछ कुछ स्मॉल पार्ट पे काम करती है. लाइक मैं आपको थोड़ा सा इंट्यूशन दे देता हूँ. देयर इज अ क्रॉस वैलिडेशन कॉल्ड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है. लेट्स सपोज आई हैव सेट के इक्वल्स टू 3. सो लेट्स से मेरा डेटा जो है अभी इतना है, ठीक है, एंड आई हैव द स्प्लिट, लाइक आई हैव सेट द स्प्लिट रेशियो टू 7:3, ठीक है. सो अगर मेरा K3 है ना, तो मेरा क्या होगा, एक पहले लाइक मेरा सैम्पल, जो सैम्पल्स हैं उसमें मेरा एक ये फर्स्ट ये बनेगा, इसके ऊपर क्रॉस वैलिडेशन होगी, लाइक दिस इज द ट्रेन एंड दिस इज द वैलिडेशन. देन मेरा सेकेंड वाला बनेगा, सेकेंड वाले में क्या होगा, ये वाला वैलिडेशन चूज होगा एंड ये वाला ट्रेन चूज होगा, ठीक है. लाइक एंड दिस इज द सेकेंड के एंड दिस इज द थर्ड. थर्ड में क्या हो सकता है, थर्ड में वी कैन हैव दिस एज लाइक दिस इज द वैलिडेशन एंड दिस इज कंप्लीट ट्रेन. सो दिस इज हाउ क्रॉस वैलिडेशन वर्क्स. सो क्रॉस वैलिडेशन के लिए यू डोंट नीड एनी सेपरेट वैलिडेशन डेटा, इट ऑटोमेटिकली डू द क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है. ओके ओके, बस अगर हमें वैलिडेशन रखना है तब हम लेंगे, क्रॉस में नहीं लेंगे ना, Right. ये If you are doing the cross validation by a like scikit-learn function, grid search या CV, randomized तब हमें CV, वैलिडेशन नहीं लेना है, वो अपने हाँ, आप ही निकाल लेगा. हाँ, वो अपने आप कर लेगा. या एंड क्रॉस वैलिडेशन ऑल्सो लीड्स टू फिटिंग. हाँ, ये मुझे थोड़ा इम्प्लीमेंट करके पता चला था, एंड आई विल शो यू लाइक वाई, हाउ एंड हाउ कैन वी डील इट एवरीथिंग. अभी आज के आप सबको क्लियर है लीनियर रिग्रेशन एंड ऑल द स्टफ. या और इसमें एक दो टर्म आई है अभी, वो भी थोड़ा सा मुझे पूछना था, जैसे एक इपो इपोक epochs, करके शायद है epochs, वो. epochs is the number हाँ of उसका थोड़ा सा iterations. Number of iterations, okay, that is, let's suppose ये मेरा sorry, this is my loss function, ठीक है, I have plotted and ओके I have set my epochs which are number of iterations to let's suppose 10, and मेरा learning rate है which is an ideal learning rate 0.1, ठीक है. तो मैंने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट किया एंड मेरी फर्स्ट आइट्रेशन हुई इतनी, सेकंड इतनी, थर्ड इतनी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ. तो मेरा टेंथ पे आके ना यहाँ पे रुक गया. मेरा डब्ल्यू एक्चुअल जो बेस्ट डब्ल्यू है वो यहाँ होना चाहिए, बट आई एम गेटिंग दिस डब्ल्यू डैश एज द डब्ल्यू, क्योंकि मेरी इपॉक 10 है. अगर अब मैं इपॉक 100 रख दूँ तो तब जो है मैं और आगे बढ़ पाऊंगा. सो दैट्स हाउ लाइक वी हैंडल द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, ठीक है. Number of iterations is not the hyper parameter because it is not affecting the model, but alpha जो है मेरा affect कर रहा है model को, क्योंकि I am taking bigger and smaller steps with the help of alpha. Iterations is like how many steps I am taking, ठीक है. तो इपोक्स और आइट्रेशन सेम Same है, these are same. दोनों अलग है. No 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 no, epochs and iteration are same. Iteration is a programming term, epoch is a machine learning term, बस. ओके ओके,
और हम कुछ ये भी तो लेते थे डेटा की, हमने काफी डेटा है तो हमने 10 का बंडल ले लिया एक पैकेट, और इस तरह से भी कोई कंसेप्ट था शायद, वो वही इसी वो में है। क्रॉस वैलिडेशन में है वो। ओके ओके ओके, सॉरी, दैट इज द हमने मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, sorry, stochastic gradient descent, and we also like we have three kinds of gradient descent mainly. Like मुझे थर्ड वन का नेम याद नहीं आ रहा. Types of gradient descent, if I search. Yeah, so we have batch gradient descent, stochastic gradient descent, and mini batch gradient descent. So पता है क्या, इन सब में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. जो स्टोकास्टिक वाला है, इसमें वी टेक द होल डेटा सेट एंड उस पर हम पूरा ये लॉस फंक्शन करते हैं. बैच वाले में वी टेक सम अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स, लेट्स से हम 100 एग्जांपल्स पे सेपरेट, सिर्फ हम 100 एग्जांपल्स पे वर्क कर रहे हैं. एंड मिनी बैच पे वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डेटा सेट्स, डेटा पॉइंट्स, लेट्स से 10 और मे बी 5 और मे बी 2. लाइक जब हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा होता है ना, देन वी डोंट यूज स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, वी यूज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि ये थोड़ा एफिशिएंट काम करता है, क्योंकि वी आर ओनली यूजिंग सम सैम्पल्स. ओके, सो और दिस मिनी इज, का तो मिनी कुछ बहुत लॉजिक आई छोटा है. थिंक बनता नहीं, पर होगा कोई ना कोई लॉजिक मिनी तब इज, है। या मिनी को यू कैन यूज एज अ लाइक टू इवेल्युएट मेनली कि कैसे काम कर रहा है मैथमेटिकली विद द नंबर्स. या ओके. Min, इनसाइड, yeah, राइट। mini batch gradient descent may also have like some applications. I don't know exactly. Um, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट सेशन कोई पे. कोई सुन कोई। सो अभी सबको आज का क्लियर हो गया. लाइक we did a lot. First we did the machine learning pipeline, column थैंक यू सो transformers मच। and all. Then we have, then we saw the linear regression with some interesting plots and all. And then हमने linear regression implement किया. So is it clear to you all? या क्लियर और पढ़ेंगे, क्लियर। Okay. बालावीरा, योगेंद्र, राधा, प्रेरणा, सबको क्लियर है? यस यस परम जी, Yeah, थैंक यू yeah. सो मच फॉर Okay. टुडे सेशन। Okay. बट कुछ डाउट्स हैं तो, यू आर इन दिल्ली परमजीत जी? Yes. आई एम टू इन दिल्ली। Okay. सो थोड़ा सेशन के बाद बात करें, लाइक हाँ, रिकॉर्डिंग. ठीक ठीक। Okay. So like अभी के लिए let's end the session. I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. We have done a lot. 3 hours से भी ज़्यादा का सेशन रहा. या बिल्कुल, So let's meet in the राइट। next session.